पाइथन प्रोजेक्ट का स्थान और नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो इस पाथ में हेलो वर्ल्ड जोड़ते हैं। यहाँ हमारा पाइथन प्रोजेक्ट सेव होने वाला है। तो चलिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं। इस विंडो में आप हमारे प्रोजेक्ट की सामग्री देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। फिलहाल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर केवल एक फोल्डर है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए है, जिसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई पाइथन फाइलें नहीं हैं। एक असली एप्लीकेशन में दर्जनों, सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों पाइथन फाइलें हो सकती हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर राइट क्लिक करें और नए पाइथन फाइल में जाएं। हम इस फाइल का नाम ऐप रखने वाले हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट विंडो को इस आइकन पर क्लिक करके संकुचित कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अधिक जगह है। आइए अपना पहला पाइथन कोड लिखें। हमें लोअर केस में प्रिंट लिखना है, फिर कोष्ठक जोड़ने हैं, फिर उद्धरण जोड़ना है, चाहे सिंगल हो या डबल। और इन उद्धरणों के भीतर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। सो ऑन इस साइड हम स्ट्रिंग कहते हैं। इस स्ट्रिंग का मतलब होता है अक्षरों का अनुक्रम। साधारण शब्दों में इसका मतलब टेक्सटुअल डेटा होता है। तो पाइथन और कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में जब भी हम टेक्सटुअल डेटा के साथ डील करते हैं, हमें हमेशा अपने टेक्स्ट को कोट्स में घेरना चाहिए। पाइथन में हम सिंगल या डबल कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। ये जो प्रिंट आप यहाँ देख रहे हैं, ये पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है और हम इसे अपनी एप्लीकेशन विंडो पर एक संदेश प्रिंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कोड को कैसे रन करना है। ऊपर हम रन मेनू पर जाते हैं और फिर रन का चयन करते हैं। ध्यान दें कि इस कमांड के साथ एक शॉर्टकट जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा शॉर्टकट का उपयोग करता हूं क्योंकि वे मेरी उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। अब ऐप का चयन करें और यहाँ तुम इस छोटी विंडो को देख सकते हो। इसे हम टर्मिनल विंडो कहते हैं और ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिखाती है। तो यहाँ टर्मिनल विंडो में प्रिंट किया गया हेलो वर्ल्ड संदेश है। जब आप और पाइथन सीखेंगे तब आप सीखेंगे कि कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ एप्लीकेशन बनाना है। ये एक एडवांस टॉपिक है, इसलिए अभी इसके बारे में चिंता नहीं करते। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। हम वेरिएबल्स का उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी उत्पाद की कीमत या किसी का नाम, उनकी ईमेल, उनकी उम्र आदि स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो किसी वेरिएबल को घोषित करने के लिए हम पहले उसका नाम टाइप करते हैं। मान लीजिए एज। फिर हम एक समान चिन्ह जोड़ते हैं और फिर हम एक मान टाइप करते हैं। मान लीजिए 20। तो इसके साथ हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं संख्या 20 स्टोर कर रहे हैं और हम इस एज को उस मेमोरी स्थान के लिए एक लेबल के रूप में जोड़ रहे हैं। तो अब हम उस मेमोरी स्थान के मान को पढ़ सकते हैं और इसे टर्मिनल पर प्रिंट कर सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की बजाय हम एज वेरिएबल का मान प्रिंट करना चाहते हैं। मैं कोष्ठकों के अंदर जो है उसे हटा रहा हूं और टाइप करें आयु। ध्यान दें कि मैं उद्धरण चिन्ह नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये प्रोग्राम चलाता हूं तो हम टर्मिनल पे टेक्स्ट आयु देखेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम आयु वेरिएबल का मान देखना चाहते हैं। तो चलो उद्धरण चिन्ह हटा दें और उम्र वेरिएबल का मान प्रिंट करें। अब यहाँ टूल बार पर तुम इस प्ले आइकन पर क्लिक करके अपना प्रोग्राम चला सकते हो या तुम शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हो जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में दिखाया था। तो शॉर्टकट यहाँ है, मैक पर वह है Ctrl Shift एंड R। तो लो हो गया। अब तुम उम्र वेरिएबल का मान देख सकते हो। अब हम एक वेरिएबल का मान भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए लाइन 2 पर हम उम्र को 30 पर सेट कर सकते हैं। अब जब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें 30 दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ निष्पादित होता है। तो इस प्रकार हम एक वेरिएबल घोषित कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो मैं एक और वेरिएबल घोषित करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइस और इसे 19.95 पर सेट कर रहा हूं। तो पाइथन में हम दशमलव बिंदु के साथ संख्या या पूर्ण संख्या का उपयोग कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल घोषित करके इसे एक स्ट्रिंग मान भी असाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला अंडरलाइन नाम। तो अगर आप वेरिएबल के नाम में कई शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक अंडरस्कोर का उपयोग करके अलग करना चाहिए। इससे हमारा कोड अधिक पढ़ने योग्य हो जाता है। देखें कि अगर मैंने इस अंडरलाइन का उपयोग नहीं किया होता तो क्या होता। यह आसानी से पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए हम हमेशा कई शब्दों को एक अंडरस्कोर से अलग करते हैं। अब हम इसे एक स्ट्रिंग पर सेट करते हैं तो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। मान ले माश। हमारे पास एक विशेष प्रकार का मान भी होता है जिसे बूलियन मान कहा जाता है, जो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। यह अंग्रेजी में हाँ या नहीं जैसा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक और वेरिएबल घोषित करने जा रहा हूं जिसे इस ऑनलाइन कहा जाता है।
और इसे ट्रू पर सेट करता हूँ। फमुंदा उस फॉर आन के फाई हम इसे फॉल्स पर भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ जो है उसे बूलियन मान कहा जाता है। अब ध्यान दें कि पाइथन एक केस सेंसिटिव भाषा है, इसलिए यह लोअर केस और अपर केस अक्षरों के प्रति संवेदनशील है। इस मामले में अगर मैं लोअर केस एफ का उपयोग करता हूँ, आप यहाँ पर एक गलती देख सकते हैं क्योंकि इसे पाइथन में नहीं पहचाना गया है। तो फॉल्स बड़े एफ के साथ पाइथन में एक विशेष कुंजी शब्द है जो बूलियन फॉल्स मान का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम पाइथन में वेरिएबल्स घोषित और उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 99% of your time. If you are not using AI in your Excel, then you are wasting 95% of your time. And if you are not using AI tools in general, my friend, you are going to get replaced. So what is solution for that? Solution for this is going to be learning AI tools and becoming irreplaceable in the job market. And who is going to teach you that? I am going to. Hi, I am Aditya Kachwe and I am an alumni of IIT Kharagpur. And in my 3 hours workshop, I am going to teach you all the latest AI tools which are absolutely very useful for every working professional. And I'm not going to price this workshop for 500 rupees or 300 rupees. I want each and every one of you to attend this workshop. That's why I'm going to keep price of this workshop just at ₹9, which is less than a packet of chips. So what are you waiting for? Click on the link below, sign up for the workshop. I'll see you inside the workshop. अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास। कल्पना करें कि आप एक अस्पताल के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो हम एक मरीज की जांच कर रहे हैं जिसका नाम जॉन स्मिथ है। वह 20 साल का है और वह नया मरीज है। मैं चाहता हूं कि आप इन मानों को स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल्स घोषित करें। अपना कोड दूसरों के साथ साझा करने के लिए नीचे टिप्पणी बॉक्स का उपयोग करें। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यूजर से इनपुट कैसे प्राप्त करें। तो पाइथन में हमारे पास एक और इनबिल्ट फंक्शन है जिसे इनपुट कहते हैं। हम इसे टर्मिनल विंडो से वैल्यू पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो हम पेरेंथेसिस जोड़ते हैं, फिर हम एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं। यहाँ हम एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है। हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह के बाद एक स्पेस था। आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि हमें ये स्पेस क्यों चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं। हमें ये मैसेज मिलता है। अब हमें एक वैल्यू एंटर करनी होगी। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैरेट प्रश्नवाचक चिन्ह से अलग हो गया है। ये यहाँ जोड़ा गया व्हाइट स्पेस के कारण है। तो अब हमें एक वैल्यू टाइप करनी होगी। मान लीजिए जॉन। जब हम एंटर दबाते हैं, ये फंक्शन वह मान लौट आएगा जो हमने टर्मिनल विंडो में प्रविष्ट किया है। तो हम उस मान को प्राप्त कर सकते हैं और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए एक वेरिएबल घोषित करते हैं जिसका नाम नेम है और इसे इनपुट फंक्शन की रिटर्न वैल्यू पर सेट करते हैं। अब हम इस यूजर के लिए एक स्वागत संदेश प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का उपयोग करें। हम नमस्ते कहते हैं। हमने एक स्पेस जोड़ा। अब स्ट्रिंग के बाद हम नाम वेरिएबल का मान जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एक प्लस साइन का उपयोग करते हैं और फिर नाम टाइप करते हैं। इसे स्ट्रिंग कंकेटनेशन कहते हैं। यहाँ हम इस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपका नाम क्या है? मोश। अब तो हमें यह संदेश मिलता है, हेलो मोश। तो हम पाइथन में इनपुट फंक्शन का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। आप पाइथन में डेटा के 3 प्रकारों के बारे में जानेंगे। हमारे पास नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बूलियंस हैं। अब कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप एक प्रकार से दूसरे प्रकार में वेरिएबल के मान को परिवर्तित करना चाहते हैं। मुझे आपको दिखाने दें। तो हम इनपुट फंक्शन का उपयोग करके उपयोगकर्ता का जन्म वर्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना जन्म वर्ष दर्ज करें। अब यह इनपुट फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है जिसे हम बर्थ अंडरलाइन ईयर नामक एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आप चलिए कोड लिखते हैं ताकि इस यूजर की उम्र का हिसाब लगा सकें। तो हम कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिलहाल हम वर्ष 2020 में हैं, तो 2020 माइनस बर्थ ईयर। यह एक्सप्रेशन या कोड का यह भाग एक वैल्यू उत्पन्न करेगा। तो एक बार फिर से हम उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उस वेरिएबल को हम आयु कहेंगे। अब हम टर्मिनल पे आयु को प्रिंट करेंगे। चलिए हमारा प्रोग्राम चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। एंड सो आउट सी क्या, मेरा जन्म वर्ष 1982 है। एंटर। ओ, हमारी प्रोग्राम क्रैश हो गई।
जब भी आप ये लाल संदेश देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई त्रुटि हुई है। तो ये त्रुटि हमारे ऐप और या फाइल के लाइन 2 में हुई है। उसके ठीक नीचे आप वह कोड देख सकते हैं जिसने यह त्रुटि उत्पन्न की। तो यह है वह एक्सप्रेशन 2020 घटा जन्म वर्ष। अब उसके नीचे आप त्रुटि के प्रकार को देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास है असमर्थित प्रकार या घटाव। हमारे पास इंट और str हैं। ये क्या है? खैर, ये इंट शॉर्ट है इंटीजर के लिए और ये प्रोग्रामिंग में पूरे नंबर को दर्शाता है। सो 2020 इंटीजर का एक उदाहरण है। जन्म वर्ष एक उदाहरण है एक स्ट्रिंग का, क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं तो यह फंक्शन एक स्ट्रिंग के रूप में मान लौट आएगा, चाहे हम एक नंबर ही क्यों ना डालें। दूसरे शब्दों में, जब मैंने 1982 दर्ज किया तो इस इनपुट फंक्शन ने इन अक्षरों वाली एक स्ट्रिंग लौट आई 1982। तो यह स्ट्रिंग नंबर से अलग है। संख्या 1982 ये पूरी तरह से भिन्न प्रकार है। तो इस मामले में मैं इन पंक्तियों को हटा देता हूं। हमें यह त्रुटि इसलिए मिली क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग को एक पूर्णांक से घटाने की कोशिश की। तो हमारा कोड इस तरह दिखता था 1992। अब पाइथन को यह नहीं पता कि किसी स्ट्रिंग को पूर्णांक से कैसे घटाया जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग को पूर्णांक में बदलना होगा। अब पाइथन में हमारे पास हमारे वेरिएबल्स के टाइप को बदलने के लिए अनेक बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसलिए हमारे पास ये इंट फंक्शन है। हम इसमें अपना जन्म वर्ष पास कर सकते हैं और यह जन्म वर्ष का नया माह के प्रस्तुतिकरण लौट आएगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए, स्ट्रिंग को बदलने के लिए तैयार आए हम इंट फंक्शन के साथ। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पहली लाइन पर हम इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं, ये एक स्ट्रिंग लौट आता है। दूसरी लाइन पर हम स्ट्रिंग को अपने इंट फंक्शन में पास करते हैं। इंट फंक्शन जन्म वर्ष का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व लौट आएगा। फिर हम इसे 2020 से घटाते हैं, हमें उम्र मिलती है और इसे एज वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब चलिए हमारा प्रोग्राम चलाते हैं। तो 1932 और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 38 साल का हूं। इस तरह से इंट फंक्शन काम करता है। अब हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है जिसे फ्लोट कहते हैं, जो किसी मान को फ्लोटिंग पॉइंट संख्या में बदलने के लिए होता है। पाइथन और अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में फ्लोटिंग पॉइंट संख्या वह होती है जिसके दशमलव बिंदु होते हैं। जैसे 10 एक पूर्णांक है और 10.1 एक फ्लोट है। हमें इंट मिला है, हमें फ्लोट मिला है और हमारे पास बूल भी है किसी वैल्यू को बूलियन में बदलने के लिए, और आखिर में हमारे पास किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलने के लिए विकल्प है। सो ये हैं हमारे वेरिएबल्स के टाइप को बदलने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस। अब यहाँ जो आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखें। तो यहाँ हमें 2 नंबर दर्ज करने होंगे। हम पूरे नंबर या दशमलव के साथ नंबर दर्ज कर सकते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम इन दोनों संख्याओं का योग प्रिंट करेगा। तो वीडियो को पॉज करें, इस एक्सरसाइज में 2 मिनट बिताएं और फिर मेरा समाधान देखें। तो ठीक है, पहले हम अपनी इनपुट फंक्शन का कॉल करेंगे ताकि हम पहली संख्या पढ़ सकें। परिणाम प्राप्त करने के बाद हम इसे फर्स्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब चलिए दूसरी वेरिएबल जिसका नाम सेकंड है को घोषित करते हैं और दूसरी संख्या पढ़ते हैं। अब हम जोड़ निकालते हैं, तो वह हुआ पहला प्लस दूसरा। अब देखते हैं कि जब हम जोड़ को टर्मिनल पर प्रिंट करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने 10 और 20 डाला, लेकिन 30 के बजाय हमें मिला 1020। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये लाइन फर्स्ट को 10 के बराबर बना देगी। आप एक स्ट्रिंग से निपट रहे हैं, एक इंटीजर से नहीं। इसी तरह सेकंड को स्ट्रिंग के रूप में 20 होना चाहिए। तो जब हम 2 स्ट्रिंग्स को मिलाते हैं 10 प्लस 30, हमें 10-20 मिलेगा, क्योंकि हम टेक्सचुअल डेटा से निपट रहे हैं। ठीक है, तो इस समस्या को हल करने के लिए हमें उन मानों को उनकी संख्यात्मक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जो हमने पढ़े हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले हमारे इंट फंक्शन को पास करेंगे और यहां भी अब हमारा कार्यक्रम चलाते हैं। तो हम 10 और 20 डालते हैं, हमें 30 मिलता है। अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालें तो 10.1 और 20। आपको एक त्रुटि मिली। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमें इन दोनों मूल्यों को फ्लोट के रूप में मानना होगा। इसलिए इंट फंक्शन की बजाय हम फ्लोट फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब
तो अब आइए हमारे प्रोग्राम को एक बार और चलाते हैं। हम एक पूर्णांक और एक फ्लोटिंग पॉइंट संख्या दर्ज करते हैं, तो परिणाम सही है। अब यहाँ एक लेबल जोड़ते हैं, तो योग है प्लस योग। चलो अपने प्रोग्राम को एक बार फिर चलाते हैं, टेंस और पीस। एक बार फिर हमें एरर मिला। एरर कह रहा है कि पाइथन केवल स्ट्रिंग्स जोड़ सकता है, फ्लोट्स को स्ट्रिंग्स में नहीं। तो पंक्ति 4 पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम इसे एक फ्लोट के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इस अभिव्यक्ति का परिणाम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। हम दो फ्लोट्स जोड़ रहे हैं तो परिणाम भी एक फ्लोट होता है, इसलिए पाइथन को ऐसा कोड समझ में नहीं आता। ये नहीं जानता कि एक फ्लोट को स्ट्रिंग के साथ कैसे मिलाएं। इस समस्या को हल करने के लिए हमें सम को एक स्ट्रिंग में बदलने की आवश्यकता है। यही जगह है जहां हम स्ट्र फंक्शन का उपयोग करते हैं। ये सही कि पूछिए। अब सुनात प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं, तो 10 + 20.1 और यहाँ परिणाम है। और एक आखिरी बात, इस उदाहरण में मैं फ्लोट फंक्शन को उस समय कॉल कर रहा हूं जब हम इन दो संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आप यहाँ फ्लोट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हम उस स्ट्रिंग को हमारे फ्लोट फंक्शन को पास कर सकते हैं। देखें तो फ्लोट कोष्ठक इस तरह, तो हम जो मान फ्लोट फंक्शन को दे रहे हैं वह इनपुट फंक्शन से रिटर्न हुआ मान है। इसी तरह हम यहाँ फ्लोट फंक्शन को कॉल करते हैं। हम इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट प्लस सेकंड में बदल सकते हैं। ये इस कोड को लिखने का एक और तरीका है, इसलिए टाइप कन्वर्जन पाइथन और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महत्वपूर्ण है। कई बार आपको वेरिएबल के टाइप को एक अलग टाइप में बदलने की आवश्यकता होती है। Is it possible to create stunning Microsoft Excel reports just like this in less than 2 minutes? Even if you are a basic user or a beginner in Microsoft Excel? The answer is a very big yes. Using AI in Microsoft Office applications like Excel, PowerPoint and Word, you can now use AI to write all your complex Excel formulas without remembering any of them. Using AI, you can now create all your Excel reports in less than 2 minutes and analyze your data to get amazing insights. And now you can create stunning PowerPoint presentations for your meetings in just 5 minutes, all with the help of AI. If you want to learn all of this, I invite you to join my certified 3-hour ChatGPT and AI hacks in Microsoft Office workshop by clicking on the link below. Hi, I'm Jatan Shah, a Microsoft certified trainer and a Microsoft certified expert. In this workshop, you will learn the AI skills that will help you save at least 2 hours of your hard work every day. The free AI tools can boost your productivity by automating your work and increase your monthly salary by 3 times. You don't need to have any prior technical experience and you don't need to learn any coding. You just need to tell the AI what you want to do and the AI will work for you. I've already helped over 23,000 of employees who use Microsoft Office every day to work 10 times faster, become irreplaceable in their jobs and unlock better job opportunities and better salary packages. Now it's your turn. So click on the link below to join the 3-hour live workshop with me and become a certified ChatGPT, AI and Microsoft Office expert. एआई लोगों की जॉब ले रहा है, आपने तो सुना ही होगा। अपने आप को अगर आपने अपग्रेड नहीं किया तो करियर में पीछे रह जाओगे, ये भी सुना होगा। जब से ये चैट जीपीटी आया हुआ है, आपका कोई काम ही नहीं रहा ऑफिस में, क्योंकि ये सारा काम तो वो कर रहा है और आप यूजलेस होते जा रहे हो, ये भी सुना होगा आपने। लेकिन क्या आपको पता है कि एमएस ऑफिस, एआई और चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन इनको इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ कूल चीजें दिखाने जा रहा हूं जो आप पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक वेरिएबल कोर्स डिक्लेयर करके और इसे सेट करते हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है ये तकनीकी रूप से एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन में एक ऑब्जेक्ट वास्तविक दुनिया में एक वस्तु की तरह होता है।
एक रूपक के रूप में अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल के बारे में सोचें। ये रिमोट कंट्रोल एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कई क्षमताएं हैं। इसमें आपके टीवी को चालू करने, बंद करने, वॉल्यूम बदलने आदि के लिए कई बटन होते हैं। इस प्रोग्राम में ये कोर्स वेरिएबल एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कई क्षमताएं हैं, इसलिए यदि आप कूल टाइप करें डॉट, आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उपलब्ध सभी क्षमताओं को देख सकते हैं। ये वास्तव में फंक्शंस हैं जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिंट या इनपुट फंक्शंस की तरह। अंतर यह है कि प्रिंट और इनपुट फंक्शंस सामान्य प्रयोजन के फंक्शंस हैं। ये किसी विशेष ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ जो फंक्शंस आप देख रहे हैं वे विशेष रूप से स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं। अब अधिक सटीक रूप में हम इन्हें मेथड्स कहते हैं। तो जब एक फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, हम उस फंक्शन को एक मेथड कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक फंक्शन या मेथड है जिसे अपर कहते हैं और हम इसका उपयोग स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए करते हैं। तो अगर हम कोर्स एट अपर को प्रिंट करें और इस प्रोग्राम को चलाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोर्स अपर केस में है। काफी उपयोगी। आप यहाँ आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये अपर मेथड हमारी मूल स्ट्रिंग को नहीं बदलता है, ये एक नई स्ट्रिंग को लौटाएगा। तो ठीक इसके बाद अगर हम कोर्स 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 को प्रिंट करें, आप देख सकते हैं कि हमारे कोर्स वेरिएबल पर कोई असर नहीं हुआ है। तो अपर मेथड एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसे लोअर कहते हैं, स्ट्रिंग को लोअर केस में बदलने के लिए। हमारे पास एक मेथड है जिसे फाइंड कहते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या कैरेक्टर्स का अनुक्रम है या नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ हम y पास कर सकते हैं और यह हमारे स्ट्रिंग में y के पहले ऑकरेंस का इंडेक्स लौट आएगा। पाइथन में किसी स्ट्रिंग में पहले अक्षर का इंडेक्स 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो टर्मिनल पर 1 दिखेगा क्योंकि y का इंडेक्स 1 है। देखो, सबसे पहले मैं इस लाइन को डिलीट करने वाला हूं, हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। चलो इस लाइन को भी डिलीट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये लो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पाइथन में लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स महत्वपूर्ण हैं। तो अगर मैं यहाँ अपर केस y पास करता हूं, ये फाइंड मेथड -1 लौट आता है क्योंकि इस स्ट्रिंग में हमारे पास अपर केस y नहीं है। हम कैरेक्टर्स की एक श्रृंखला भी पास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 4, तो यह 4 शब्द के इंडेक्स को लौट आएगा। देखिए, तो ये साथ कभी कभी आपको किसी स्ट्रिंग में कुछ बदलने की जरूरत महसूस होती है। ऐसा करने के लिए हम रिप्लेस मेथड का उपयोग करते हैं। रिप्लेस, तो हम 4 को एक स्ट्रिंग के साथ बदल सकते हैं जिसमें संख्या 4 है। देखो, तो पाइथन शुरुआती लोगों के लिए जाहिर है, अगर आप हमारे स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होने वाले किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर की सीक्वेंस की खोज करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप x को 4 के साथ बदलने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है हमारे पास यहाँ x नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। और जैसे कि अपर मेथड, रिप्लेस मेथड हमारी असली स्ट्रिंग को संशोधित नहीं करेगा, इसलिए ये एक नई स्ट्रिंग वापस करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन और कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में स्ट्रिंग्स अपरिवर्तनीय होते हैं। हम उन्हें एक बार बना लें तो बदल नहीं सकते। जब भी हम एक स्ट्रिंग बदलना चाहते हैं, हमें मेमोरी में एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इस ट्यूटोरियल में मैं आखिरी चीज जो कवर करना चाहता हूं, कभी कभी आपको देखना होता है कि आपकी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या कैरेक्टर की श्रृंखला शामिल है या नहीं। एक तरीका है फाइंड मेथड का उपयोग करना, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो चलिए देखते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग में पाइथन है या नहीं। अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, ये हमारे स्ट्रिंग में शब्द पाइथन के पहले ऑकरेंस का इंडेक्स है। अब पाइथन में हम इन ऑपरेटर भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इस तरह हम एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं पाइथन, फिर हम टाइप करते हैं, ये पाइथन में एक विशेष कीवर्ड है, इसे हम इन ऑपरेटर कहते हैं। तो उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के साथ हम देख रहे हैं कि क्या हमारे कोर्स में पाइथन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाइथन कोड बहुत पठनीय है, ये साधारण अंग्रेजी की तरह है। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, पाइथन के पहले ऑनकरेंस का इंडेक्स देखने के बजाय हमें एक बूलियन वैल्यू दिखाई दे रही है। ये बहुत सारे मामलों में अधिक वांछनीय होता है। अगली बार हम एरिथमेटिक ऑन ऑपरेशंस देखेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पाइथन में उपलब्ध अंकगणित ऑपरेटर दिखाने जा रहा हूं। ये वही अंकगणित ऑपरेटर हैं जो गणित में होते हैं। उदाहरण के लिए हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और इसी तरह। तो चलिए 10 + 3 को प्रिंट करें। जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो हमें 13 मिलता है। तो ये जोड़ने वाला ऑपरेटर है। हमारे पास घटाने के लिए भी ऑपरेटर है, हमारे पास गुणा करने के लिए ऑपरेटर है और डिवीजन।
अब तकनीकी रूप से हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के डिवीजन ऑपरेटर होते हैं। हमारे पास एक स्लैश के साथ डिवीजन है और एक दो स्लैश के साथ। आइए अंतर को देखें। अगर आप एक सिंगल स्लैश का उपयोग करते हैं, हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलता है जो दशमलव बिंदु वाला नंबर है। लेकिन यदि आप डबल स्लैश का उपयोग करते हैं तो हमें एक पूर्णांक, एक पूरा नंबर मिलता है। फॉर 9 हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है जिसे प्रतिशत चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है और यह 10 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल को लौट आता है। तो ये 1 है। और अंत में हमारे पास घातांक ऑपरेटर है जिसे 2 तारांकन चिन्हों द्वारा इंगित किया जाता है। तो यह 10 की घात 3 है। जब हम इसे चलाते हैं तो हमें 1000 मिलता है। अब आपने जिन ऑपरेटरों को देखा उनके लिए हमारे पास एक प्रवर्धित असाइनमेंट ऑपरेटर है। आइए मैं इसे समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चर x नाम का है और हम इसे 10 पर सेट करते हैं। अब हम x के मान को 3 से बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इस तरह का कोड लिखना होगा, x बराबर x प्लस 3। जब पाइथन इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो यह इस एक्सप्रेशन या कोड के इस टुकड़े का मूल्यांकन करेगा। इस एक्सप्रेशन का परिणाम है 10 प्लस 3 जो 13 है। फिर यह x में 13 को स्टोर करेगा। अब वही परिणाम कम कोड का उपयोग करके प्राप्त करने का एक और तरीका है। हम x प्लस बराबर 3 टाइप कर सकते हैं। जो हमारे पास लाइन 3 पर है वह बिल्कुल समान है जो हमारे पास लाइन 2 पर है। तो इसे बढ़ाया हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास यह असाइनमेंट ऑपरेटर है लेकिन हमने इसे बढ़ाया या संवर्धित किया है। अब यहाँ पे हम घटाने का उपयोग करके x के मान को 3 से घटा सकते हैं। हम गुणा का उपयोग भी कर सकते हैं और इसी तरह। तो ये हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पाइथन में। ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। मैं एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे x कहेंगे और इसे 10 प्लस 3 गुणा 2 से सेट करेंगे। आपको क्या लगता है इस एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा? यह एक बुनियादी गणित का सवाल है जिसका उत्तर देने में बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। इसका उत्तर है 16। यहाँ कारण है, गणित में हमारे पास एक अवधारणा है जिसे ऑपरेटर प्रीसीडेंस कहा जाता है और यह निर्धारित करता है कि इन ऑपरेटरों को किस क्रम में लागू किया जाता है। तो गुणा और विभाजन की उच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का यह हिस्सा पहले मूल्यांकित होता है। तो 2 गुना 3 बराबर 6 होता है और फिर परिणाम में 10 जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इस एक्सप्रेशन का परिणाम 16 होता है। आप पाइथन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस बिल्कुल गणित की तरह है, लेकिन हम इसे हमेशा पेरेंथेसिस का उपयोग करके बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप चाहते हैं कि 10 प्लस 3 पहले मूल्यांकित हो तो हम इसे पेरेंथेसिस में लपेट सकते हैं। इसलिए इस तरह से अब जब हम इस कोड को चलाते हैं तो हमें 34 दिखेगा क्योंकि 10 प्लस 3 13 होता है और उसे 2 से भाग दें तो 36 होता है। आइए इसे सत्यापित करें। तो प्रिंट करें x और हमें 36 मिलते हैं। If you want to become a pro Python developer without having any prior knowledge on the subject, then join our 30-day Python using AI bootcamp. We are going to teach you Python from scratch to advanced, which includes how to include AI in your Python. Number 1, code in Python 10 times faster. Number 2, debug any code in under 10 minutes. And number 3, perhaps the most intriguing, creating apps from Python in a matter of hours. All of this is possible only when you integrate AI in Python. And the best part, you can get access to this 30-day bootcamp at just 199 rupees. Python developers who know the trick of the trade, which is including AI in their coding, are getting recruited in the top MNCs of the world. Meta, Google, Amazon, and many more, and at lucrative packages like 15 LPA, 18 LPA, 25 LPA, and much more. What are you waiting for? Click the link below and join our Python using AI bootcamp at just 199 rupees. Hurry, seats are limited. तो आपने पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखा। अब हमारे पास पाइथन में एक और सेट के ऑपरेटर हैं जिसे तुलनात्मक ऑपरेटर कहा जाता है। हम इन ऑपरेटर का उपयोग मूल्यों की तुलना करने के लिए करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं एक वेरिएबल x घोषित करने जा रहा हूं और इसे इस प्रकार के एक्सप्रेशन पर सेट कर रहा हूं। 3 देखा, ताऊ से बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ ये कोड का टुकड़ा है। इस एक्सप्रेशन को एक बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है क्योंकि ये एक बूलियन मान उत्पन्न करता है। तो इस मामले में क्योंकि 3 2 से बड़ा है, इस एक्सप्रेशन का परिणाम बूलियन ट्रू होता है। तो यदि हम प्रिंट करते हैं x 2 से बड़ा है, हमें x 2 से बड़ा मिलेगा।
सिपोइसान और मार्क निंती हमें टर्मिनल पर ट्रू मिलता है। तो यहाँ अधिक बड़ा ऑपरेटर है, हमारे पास बराबर या अधिक, कम, बराबर या कम। यहाँ इक्वालिटी ऑपरेटर है जिसे दो समान चिन्हों से इंगित किया जाता है। इसे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भ्रमित न करें। तो यहाँ हम 3 और 2 की बराबरी की तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं हमें फॉल्स मिलता है क्योंकि 3 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ इक्वालिटी ऑपरेटर है, हमारे पास नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर भी है जो एक विस्मयादिबोधक चिन्ह और उसके बाद समान चिन्ह से इंगित होता है। तो जल्दी से दोहरा लेते हैं। यहाँ वे तुलनात्मक ऑपरेटर हैं जो हमारे पास पाइथन में है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल। ये ऑपरेटर असली पाइथन प्रोग्राम्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अधिकतर हमें कुछ स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यों की तुलना करनी पड़ती है। आप इसे जल्द ही देखेंगे। पाइथन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक और सेट होता है। हम इन ऑपरेटरों का उपयोग जटिल नियम और शर्तें बनाने के लिए करते हैं। मुझे आपको दिखाने दें तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम प्राइस है और इसे 25 पर सेट करूंगा। अब चलिए एक बूलियन एक्सप्रेशन प्रिंट करते हैं जैसे कि प्राइस 10 से बड़ा है। अब मान लीजिए हम जांचना चाहते हैं कि कीमत 10 और 30 के बीच है या नहीं। यहाँ हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, इसलिए हम टाइप करते हैं और उसके तुरंत बाद एक और बूलियन एक्सप्रेशन टाइप करते हैं, इसलिए कीमत 30 से कम। तो इस और ऑपरेटर के साथ अगर ये दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू लौटाते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का परिणाम ट्रू होगा। देखो इस केस में हमें सही उत्तर मिलता है क्योंकि मूल्य $10 और $30 के बीच है। हमारे पास या ऑपरेटर भी है। या ऑपरेटर के साथ यदि इनमें से कम एक बूलियन अभिव्यक्ति सही है तो इस पूरी अभिव्यक्ति का परिणाम सही होगा। इसे प्रदर्शित करने के लिए मैं मूल्य को $5 में बदल रहा हूं। चलिए देखते हैं कि पाइथन इस कोड को कैसे निष्पादित करेगा। तो पहले ये इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखेगा, क्या प्राइस 10 से अधिक है? नहीं है, तो ये आगे बढ़ेगा। फिर ये दूसरी बूलियन एक्सप्रेशन को देखेगा, क्या प्राइस 30 से कम है? हाँ, सही है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का परिणाम सच होगा। देखिए, और ये लो, आपके पास नॉट ऑपरेटर भी है जो मूल रूप से दी गई किसी भी वैल्यू को उल्टा कर देता है। मुझे आपको दिखाने दीजिए। तो हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा, प्राइस 10 से अधिक। इस एक्सप्रेशन का परिणाम गलत है। अब अगर आप नॉट ऑपरेटर लागू करते हैं तो ये गलत को सही में बदल देगा। तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें सही मिलेगा। तो जल्दी से फिर से देखते हैं। पाइथन में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। हमारे पास लॉजिकल और है जो तभी सत्य लौटाता है जब दोनों अभिव्यक्तियां सत्य लौटाती हैं। हमारे पास लॉजिकल या है जो सत्य लौटाता है अगर कम से कम एक अभिव्यक्ति सत्य हो, और हमारे पास नहीं है जो हमें कोई भी मान उलटना देता है। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में IF स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में निर्णय लेने के लिए इफ स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक वेरिएबल नामक तापमान को घोषित कर सकते हैं और इस वेरिएबल के मूल्य के आधार पर हम टर्मिनल पर विभिन्न संदेशों को प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो यह है हमारा तापमान वेरिएबल। हमने इसे 35 पर सेट किया है। अब मान लीजिए यदि तापमान 30 से अधिक है तो आप एक संदेश प्रिंट करना चाहते हैं कि आज गर्म दिन है। तो हम लिखते हैं यदि, उसके बाद हम एक शर्त लिखते हैं और यहीं हम अपने तुलना ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो हम लिखते हैं तापमान 30 से अधिक, फिर हम एक कॉलन जोड़ते हैं और देखें कि अब मैं एंटर दबाता हूं तो क्या होता है। यहां कैरेक्टर इंडेंट किया गया है और यह कोड के ब्लॉक को दर्शाता है। तो यहां लिखा गया कोड तभी निष्पादित होगा जब यह शर्त सही हो, अन्यथा इसे निष्पादित नहीं किया जाएगा। मुझे आपको दिखाने देते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे, आज बहुत गर्मी है। और वैसे ध्यान दें कि यहां मैंने डबल कोट्स का उपयोग करके स्ट्रिंग को घेरा है क्योंकि यहां एकल उद्धरण एक अपॉस्ट्रोफी के रूप में है। तो मैं एकल उद्धरणों के साथ इस तरह एक स्ट्रिंग को घोषित नहीं कर सकता। अगर मैं टाइप करूं इट्स अ हॉट डे, पाइथन भ्रमित हो जाता है क्योंकि यह सोचता है कि यह एकल कोट हमारे स्ट्रिंग का अंत दर्शाता है, इसलिए यह अगले अक्षरों को पहचान नहीं पाता। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहां दोहरा विश्वासघात है। तो हम अपनी स्ट्रिंग में एक अपॉस्ट्रोफी रख सकते हैं। तो आज गर्म दिन है। अब अगर मैं फिर से एंटर दबाता हूं तो कैरेक्टर इंडेंट हो जाता है। तो यहां लिखा गया कोड हमारे IF ब्लॉक का हिस्सा होगा और यह तभी निष्पादित होगा जब यह शर्त सही हो। तो यहां हम दूसरा संदेश प्रिंट कर सकते हैं
खूब सारा पानी पिएं। अब इस ब्लॉक को समाप्त करने के लिए हम एंटर दबाते हैं, फिर शिफ्ट और टैब दबाते हैं। कर्सर अब इंडेंटेड नहीं है, इसलिए यहां लिखा गया कोड हमेशा निष्पादित होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे यह शर्त सही हो या ना हो। अब सी आधारित प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C++, C#, जावा और जावास्क्रिप्ट में हम एक ब्लॉक को कोड को कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करके प्रस्तुत करते हैं। तो आप कोड के ब्लॉक को एक लेफ्ट ब्रेस से शुरू करते हैं और फिर इसे राइट ब्रेस से समाप्त करते हैं। पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, इसलिए हम इंडेंटेशन का उपयोग करके कोड ब्लॉक को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस मामले में ये 2 लाइनें इंडेंटेड हैं और इसका मतलब है कि वे इस कोड ब्लॉक का हिस्सा हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम ये 2 संदेश देखते हैं, क्योंकि तापमान 30 से अधिक है। अब अगर मैं तापमान को 25 में बदल दूं और प्रोग्राम को फिर से चलाऊं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इस ब्लॉक के बाद चलिए डन प्रिंट करते हैं, क्योंकि ये कोड इंडेंटेड नहीं है, ये हमेशा निष्पादित होगा। ये हमारे IF ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये रहा पूरा संदेश। अब हम एक दूसरी शर्त जोड़ते हैं। तो अगर तापमान 30 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि यह 30 या इससे कम है। तो मैं एक दूसरी शर्त जोड़ता हूं। तो अगर तापमान 20 और 30 के बीच है, तो मैं प्रिंट करूंगा आज का दिन अच्छा है। तो यहां हम elif टाइप करते हैं, जो else if का संक्षिप्त रूप है, और यहां हम दूसरी शर्त लिखते हैं, जैसे तापमान 20 से अधिक। हम एक कॉलन जोड़ते हैं, एंटर दबाते हैं। अब हमारे पास एक नया ब्लॉक है, तो यहां हम प्रिंट कर सकते हैं आज का दिन अच्छा है। तो अगर यह शर्त सही है, इसका मतलब है कि तापमान 20 से अधिक और 30 से कम या बराबर है। अब यहां हमारे पास एक टिप्पणी है, यही कारण है कि यह ग्रे आउट है। यह वास्तविक कोड नहीं है, यह सिर्फ एक नोट है जो हम अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं। पाइथन इसे निष्पादित नहीं करेगा, इसलिए जब भी हम पाउंड साइन टाइप करते हैं जो हमारे पास है, वह एक टिप्पणी के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर यह स्थिति सही है तो हम यह संदेश टर्मिनल पर देखेंगे। आइए अपना प्रोग्राम चलाकर इसे सत्यापित करें। लीजिए, तापमान 25 है, इसलिए हम यह संदेश देख रहे हैं। अब हम जितनी शर्तें चाहें लिख सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक और शर्त जोड़ते हैं। अगर तापमान 10 से अधिक है, तो हम प्रिंट करेंगे थोड़ा ठंड है। अब इस मामले में अगर यह शर्त सही है, तो इसका मतलब है कि तापमान 10 से अधिक और 20 के बराबर या उससे कम है। अब अंत में यदि तापमान 10 से कम है, तो एक संदेश प्रिंट करते हैं जिसमें लिखा हो कि आज ठंडा दिन है। तो यहां हम टाइप करते हैं एल्स, फिर एक कॉलन जोड़ते हैं, और अब हमारे पास एक नया ब्लॉक है। तो यह कोड निष्पादित होगा यदि उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया हो। तो यहां हम प्रिंट कर सकते हैं ठंड है। तो इस प्रकार से हम IF स्टेटमेंट्स का उपयोग अपने प्रोग्राम्स में निर्णय लेने के लिए करते हैं। कि अब तक आपने जो सीखा है उसे अभ्यास करने का एक शानदार मार्ग है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ही एक वजन परिवर्तक प्रोग्राम लिखें। तो यह प्रोग्राम मुझसे मेरा वजन पूछ रहा है, मैं 170 दर्ज करता हूं। अगला यह मुझसे पूछ रहा है कि वजन किलोग्राम में है या पाउंड में। तो मैं किलोग्राम के लिए का या पाउंड के लिए ईपी दर्ज कर सकता हूं। मैं छोटा अप या बड़ा ईपी दर्ज कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम छोटे पी के साथ चलते हैं। वजन किलोग्राम में 636.5 है। तो इस व्यायाम में 5 मिनट बिताएं। आप नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स का उपयोग करके अपना कोड दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, और फिर जब आप समाप्त कर लें तो वापस आकर मेरा समाधान देखें। तो पहले हम अपनी इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि पहला सवाल पूछा जा सके। इंतजार करें, हमें परिणाम मिलता है और इसे वेट नामक एक वेरिएबल में सहेज लेते हैं। अब हम इनपुट फंक्शन को एक और बार कॉल करके दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या यह किलोग्राम में है या पाउंड। हमें परिणाम मिलता है और इसे यूनिट नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और यहां पर हम एक इफ स्टेटमेंट का उपयोग करने वाले हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि यूनिट बराबर है के के। फिर हमें वजन को पाउंड में बदलना चाहिए और इसे एक टर्मिनल में प्रिंट करना चाहिए। हालांकि इस कोड के साथ अगर मैं छोटे अक्षरों में के टाइप करता हूं तो यह शर्त सही नहीं होगी, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव भाषा है। तो हमें इस स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने की जरूरत है। पहले हमने स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात की थी। तो अगर आप डॉट टाइप करते हैं तो
तो हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उपलब्ध सभी फंक्शंस या मेथड्स देख सकते हैं। तो हम अपर मेथड का उपयोग करते हैं और ये ऑपरेट केस में एक नया स्ट्रिंग लौट आता है। अब अगर ये शर्त सही है तो सबसे पहले हमें वजन को पाउंड में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए हम एक नया वेरिएबल घोषित करते हैं जिसका नाम है कन्वर्टेड। वजन को प्राप्त करें और इसे 0.45 से विभाजित करें और फिर हम इसे एक टर्मिनल पर प्रिंट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इंतजार वजन पाउंड में है, फिर हम कन्वर्टेड जोड़ते हैं। अब इस ब्लॉक को समाप्त करने के लिए हम शिफ्ट और टैब दबाते हैं, अन्यथा कॉलन। तो अगर यह शर्त सही नहीं है, इसका मतलब है कि वजन पाउंड में दर्ज किया गया था, इसलिए हमें इसे किलोग्राम में बदलना होगा। फिर से हम एक वेरिएबल घोषित करते हैं, इसे बदलते हैं और वजन को 0.45 से गुणा करते हैं और फिर हम वजन को किलोग्राम में प्रिंट करते हैं और यहां हम कॉन्कैटनेट करते हैं इस स्ट्रिंग के साथ कन्वर्टर। ठीक है, अब हमें इस ब्लॉक को समाप्त करने की जरूरत है, इसलिए हम एंटर दबाते हैं, फिर शिफ्ट और टैब। अच्छा, अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो हमें एक एरर दिखाई देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए इसे चलाते हैं। यहां मैं 170 दर्ज कर रहा हूं, फिर मैं एक छोटा एल टाइप करता हूं। यहां एक त्रुटि है, अनुक्रम को फ्लोट प्रकार की गैर इंट से गुणा नहीं कर सकते। तो हमें यह त्रुटि यहां मिली जब हमने वजन को 0.45 से गुणा करने की कोशिश की थी। तो यह हमारी कोड की लाइन 7 है। अब इसका कारण यह हो रहा है क्योंकि वेट वेरिएबल एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहां हमें वेट को कन्वर्ट करना है एक संख्या में। हम या तो इंटी या फ्लोट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को एक बार और चलाते हैं। तो 170 पाउंड में। यहां दूसरी त्रुटि है, केवल स्ट्रिंग को मिला सकते हैं, फ्लोट को नहीं। और यह त्रुटि यहां हुई जब हमने वजन को किलोग्राम में प्रिंट करने की कोशिश की। तो 7वीं पंक्ति को देखें। इस मामले में वजन एक पूर्णांक है, हम एक पूर्णांक को एक फ्लोट से गुणा कर रहे हैं और इस ऑपरेशन का परिणाम एक फ्लोट होगा। अब लाइन 8 पर हम एक स्ट्रिंग को एक फ्लोट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पाइथन नहीं जानता कि इस कोड को कैसे निष्पादित किया जाए। इस समस्या को हल करने के लिए हमें इस फ्लोट को एक स्ट्रिंग में बदलना होगा। तो यहां हम बिल्ट इन स्टीयर फंक्शन का उपयोग करते हैं। चलिए प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। 170 पाउंड में और यहां मेरा वजन किलोग्राम में है। अब चलिए किलोग्राम में वजन दर्ज करते हैं। तो इसे एक बार फिर चलाते हैं। मान लीजिए 36 किलो। यहां हमें एक परिचित त्रुटि मिलती है, केवल स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मिला सकते हैं, फ्लोट से नहीं। तो यह त्रुटि 5वीं पंक्ति में हुई जहां हमने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मिलाने की कोशिश की इसे फ्लोट में बदलने के लिए। तो एक बार फिर हमें इसे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत है। अब एक बार फिर से प्रोग्राम चलाते हैं। 76 किलो बराबर होता है 168 पाउंड के। अरे दोस्तों, मैं बस आपको बता देना चाहता था कि मेरा ऑनलाइन कोडिंग स्कूल codewithmoz.com पर है, जहां आप वेब और मोबाइल डेवलपमेंट पर बहुत सारे कोर्सेज पा सकते हैं। असल में मेरे पास एक व्यापक पाइथन कोर्स है जो आपको पाइथन के बारे में बुनियादी से लेकर उन्नत अवधारणाओं तक सब कुछ सिखाता है। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पाइथन कोर्स को देख सकते हैं। इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी और एक प्रमाण पत्र है जिसे आप अपने रिज्यूमे में जोड़ सकते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो लिंक इस वीडियो के नीचे है। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में व्हाइल लूप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम व्हाइल लूप्स का उपयोग कोड के एक ब्लॉक को कई बार दोहराने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 1 से 5 तक की संख्याएं प्रिंट करना चाहते हैं। इसे करने का एक खराब तरीका यह है, पहले 1 प्रिंट करें, फिर 2 प्रिंट करें, फिर 3, फिर 4 और अंत में 5 प्रिंट करें। अब यह गलत दृष्टिकोण क्यों है? खैर, अगर आप 1 से 10 लाख तक के नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, हम 10 लाख पंक्तियों का कोड नहीं लिखना चाहते, हर पंक्ति में एक नंबर प्रिंट हो रहा हो, यहां व्हाइल लूप्स का उपयोग किया जाता है। हम एक वेरिएबल जैसे आई डिक्लेयर करके शुरू करेंगे और इसे अपनी प्रारंभिक संख्या मान लीजिए 1 पर सेट करेंगे। फिर हम टाइप करते हैं जबकि, और यहां हम एक शर्त लिखते हैं। तो एक बार फिर हम अपनी तुलना ऑपरेटरों का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आई 5 से कम है, 5 से कम या बराबर है। जब तक यह शर्त सही है तब तक व्हाइल ब्लॉक के अंदर लिखा गया कोड निष्पादित होगा। तो यहां हम कॉलन टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। अब हमारे पास एक कोड ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हम आई को प्रिंट कर सकते हैं और फिर हमें आई को 1 से बढ़ाना होगा, इसलिए हम आई को i+1 पर सेट करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते
तो आई हमेशा 1 रहेगा और ये कोड ब्लॉक अनिश्चित काल तक निष्पादित होता रहेगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा। मूल रूप से हमारा प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेमोरी खत्म नहीं हो जाती। तो पहले इटरेशन में आई 1 है, ये 5 से कम है, इसलिए पाइथन इस कोड ब्लॉक को निष्पादित करेगा। ये टर्मिनल पर 1 प्रिंट करेगा और फिर आई 2 हो जाएगा। फिर नियंत्रण यहां वापस चला जाता है। तो पाइथन इस शर्त का मूल्यांकन करता है 2 5 से कम या बराबर है, इसलिए शर्त सही है। और एक बार फिर पाइथन इस ब्लॉक को एक बार और निष्पादित करेगा। दूसरी पुनरावृत्ति में हम टर्मिनल पर 2 देखेंगे और फिर आई 3 बन जाएगा। तो यह तब तक जारी रहेगा जब तक यह शर्त सही नहीं रहती। मुझे दिखाने दो। चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब हम 1 से 5 तक की संख्याएं देखते हैं। तो यही है व्हाइल लूप्स का सौंदर्य। मैं आसानी से 5 को 1000 में बदल सकता हूं, और वैसे मैं इन 3 अंकों को अंडरस्कोर का उपयोग करके अलग कर रहा हूं। इससे मेरा नंबर अधिक पठनीय बन जाता है। हमें यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमारे कोड को अधिक पठनीय बना देता है। चलिए अब प्रोग्राम चलाते हैं। अब हम संख्या 1 से 1000 तक देखते हैं। ये 1000 लाइनों के कोड से बहुत आसान है, जहां हर लाइन एक संख्या प्रिंट करती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छा दिखाता हूं। तो अब मैं इसे 10 में बदलने जा रहा हूं। अब आई को प्रिंट करने की बजाय मैं एक अभिव्यक्ति प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं आई को एक स्ट्रिंग, एक तारांकित चिन्ह से गुणा करूंगा। अब आप यहां भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि पाइथन में हम एक संख्या को स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट नहीं कर सकते, लेकिन यहां मैं मल्टीप्लिकेशन ऑन ऑपरेटर का उपयोग कर रहा हूं। अच्छा, ये अलग है। हम किसी नंबर को एक स्ट्रिंग से गुणा कर सकते हैं और ये उस नंबर के मान के आधार पर उस स्ट्रिंग को दोहरा देगा। तो अगर आई 1 है, हम एक तारा देखेंगे। अगर आई 5 है, हम 5 तारे देखेंगे। चलिए मैं दिखाता हूं। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हम इस त्रिभुज के आकार को देखते हैं, क्योंकि पहली बार जब आई 1 होता है तो हम एक तारा देखते हैं। हर पुनरावृत्ति में आई 1 से बढ़ता है तो हम एक अतिरिक्त तारा देखते हैं, और अंततः अंतिम पुनरावृत्ति में आई 10 होता है और हम टर्मिनल पर 10 तारे देखते हैं। तो आपने पाइथन में 3 प्रकार के डेटा के बारे में सीखा। हमारे पास संख्याएं हैं जो पूर्णांक या फ्लोट हो सकते हैं, हमारे पास बूलियन है, और स्ट्रिंग्स हैं। इन्हें हम पाइथन में प्रिमिटिव या बेसिक टाइप्स कहते हैं। अब पाइथन में हमारे पास कई कॉम्प्लेक्स टाइप्स भी हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप्स असली एप्लीकेशन बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सूचियों का उपयोग तब करते हैं जब हम वस्तुओं की एक सूची को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसे नंबरों की एक सूची या नामों की एक सूची। मुझे तुम्हें दिखाने दो। तो मैं एक चर को नामों से बुलाकर घोषित करने जा रहा हूं और इसे नामों की सूची पर सेट कर रहा हूं। तो यहां हम एक सूची को प्रदर्शित करने के लिए वर्ग कोष्ठक जोड़ते हैं, और अब हम इस सूची में एक या एक से अधिक वस्तुओं को जोड़ सकते हैं। इस सूची में हम कई नाम जोड़ते हैं, जैसे जॉन, बॉब, मोश, सैम और मैरी। तो हम इन वस्तुओं को अल्प विराम का उपयोग करके अलग करते हैं। ठीक है, अब हमारी सूची प्रिंट करें तो नाम प्रिंट करें। चलो बॉब, मोश, सैम और मैरी को प्रिंट करते हैं। देखें, ये बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे हमने इसे लिखा था। अब हम इस सूची में व्यक्तिगत तत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इस सूची में पहला तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां है एक जोड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक इंडेक्स लिखते हैं। इस लिस्ट में पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हम टर्मिनल पर जॉन को देखेंगे। ये लो। पाइथन में हम नेगेटिव इंडेक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक फीचर है जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में नहीं देखा है। तो अगर 0 इस सूची में पहले तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको क्या लगता है कि -1 क्या प्रतिनिधित्व करता है? ये इस सूची में अंतिम तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चलो इसे सत्यापित करते हैं। तो चलो प्रोग्राम चलाते हैं, और ये रही मेरी। क्या कहेंगे? -2 का मतलब है सूची के अंत से दूसरा तत्व। तो चलिए प्रोग्राम को चलाते हैं, और यहां है सैम। अब हम एक दिए गए इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट को बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमने यहां गलती की है और इस जॉन को एच के साथ नहीं लिखा जाना चाहिए, इसलिए हमें इसे रीसेट करना होगा। हम यहां 0 के नाम टाइप कर रहे हैं, और अब इसे एक सामान्य वेरिएबल की तरह मानते हैं, इसलिए हम इसे एक नए मान से सेट कर देते हैं। हमने इसे एच के बिना जॉन पर सेट किया। अब चलो अपनी सूची छापते हैं, और यह हमारी अपडेटेड लिस्ट है। बहुत ही बढ़िया। हम मान लें कि हम केवल पहले 3 नामों में रुचि रखते हैं। मान लीजिए हम एक श्रृंखला का चयन करते हैं। यहां हम वर्ग कोष्ठक टाइप करते हैं,
और यहां हमें शुरुआत और अंत इंडेक्स टाइप करना होता है। हमारी शुरुआत का इंडेक्स 0 है क्योंकि हम यहां से शुरू करना चाहते हैं। हमारा अंतिम इंडेक्स 0 इन 2 प्लस 8 होगा जो 3 होगा। तो हम एक कॉलन जोड़ते हैं 3। तो पाइथन प्रारंभ इंडेक्स से लेकर अंतिम इंडेक्स तक के सभी तत्वों को लौटाएगा, लेकिन अंतिम इंडेक्स को शामिल नहीं करेगा। तो यह 0, 1 और 2 पर तत्वों को लौटाएगा। देखिए, यह रहे पहले 3 नाम और वैसे। यह अभिव्यक्ति हमारी मूल सूची को संशोधित नहीं करती, यह एक नई सूची लौटाती है। इसलिए इस प्रिंट कथन के तुरंत बाद अगर हम अपनी मूल सूची को प्रिंट करते हैं तो हमें एक नई सूची मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यह नहीं बदला गया है। तो इस तरह हम पाइथन में सूचियों का उपयोग करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पाइथन में स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स असली दुनिया की वस्तुओं जैसे होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आपकी साइकिल, आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल वगैरह। इनके पास कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं। तो यदि आप यहां एक स्ट्रिंग टाइप करें और फिर डॉट दबाएं तो हम पाइथन में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उपलब्ध सभी फंक्शंस या मेथड्स देख सकते हैं। अब सूचियां भी वस्तुएं हैं, इसलिए उनमें आइटम जोड़ने या हटाने आदि के लिए कई तरीके होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं संख्याओं की एक सूची घोषित कर रहा हूं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब इस सूची के अंत में नया तत्व जोड़ने के लिए हम अपेंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे numbers.append और यहां टाइप करेंगे 6। अब चलो हमारी सूची को प्रिंट करते हैं। तो यहां हमारी अद्यतित सूची है। सुंदर। अब क्या हो अगर आप बीच में या शुरुआत में कोई संख्या डालना चाहते हैं? इसके लिए इंसर्ट मेथड का उपयोग करें। तो हम इंसर्ट विधि को कॉल करने जा रहे हैं। अब ऊपर व्यू मेन्यू पर जाएं और पैरामीटर इन्फो देखें, शॉर्टकट देखें। एक मैक कंप्यूटर पर यह कमांड और पी है, विंडोज पर यह शायद कंट्रोल और पी होगा। अगर हम ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह मेथड किन मानों की उम्मीद करता है। तो इस विधि की अपेक्षा पहला मान एक इंडेक्स मान होना चाहिए और इस मान का प्रकार एक पूर्णांक होता है। इसलिए अगर मुझे इस सूची की शुरुआत में कोई मान सम्मिलित करना है तो मुझे पहले तत्व के रूप में 0 पास करना चाहिए, है ना? तो चलिए 0 पास करते हैं। अब दूसरा मान हाईलाइट किया गया है। तो दूसरा मान एक ऑब्जेक्ट है और इसका प्रकार टी है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम एक संख्या, एक बूलियन, एक स्ट्रिंग, एक सूची या पाइथन में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो मैं -1 पास करने जा रहा हूं। अब हमारा प्रोग्राम चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सूची की शुरुआत में नकारात्मक 1 आया है। हमारे पास आइटम हटाने के लिए भी एक विधि है। तो 3 हटाने का कॉल करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। 3 चला गया है। हमारे पास केवल 1, 2, 4 और 5 हैं। अब यदि आप सूची के सभी आइटम हटाना चाहते हैं तो हम क्लियर मेथड का उपयोग करते हैं। तो क्लियर यह विधि किसी भी मान की उम्मीद नहीं करती है। तो चलिए अपना प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी सूची खाली है। अब कभी कभी आप जानना चाहते हैं कि कोई दी गई वस्तु हमारी सूची में है या नहीं। ऐसा करने के लिए हम इन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो इस लाइन को हटाते हैं। हमारी संख्याओं की सूची को प्रिंट करने के बजाय मैं एक अभिव्यक्ति प्रिंट करने जा रहा हूं, संख्याओं में 1। तो यहां हम इन ऑपरेटर का उपयोग कर रहे हैं। हम ये जांच रहे हैं कि एक संख्याओं की सूची में है या नहीं। तो ये एक बूलियन अभिव्यक्ति है, ये एक बूलियन मान लौटाता है। देखिए, तो हमें ट्रू मिलता है। जाहिर है कि अगर हम इस सूची में मौजूद नहीं मान की खोज करते हैं, जैसे 10, तो हमें फॉल्स मिलता है। अब अंततः कई बार ऐसा होता है कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पास सूची में कितने आइटम हैं। ऐसा करने के लिए आप इनबिल्ट लेन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए संख्याओं को लेन प्रिंट करते हैं। तो लेन एक इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन, इसीलिए यह पर्पल के रूप में हाईलाइट किया गया है। यह सूची में तत्वों की संख्या लौटाता है। देखिए, तो इस सूची में हमारे पास 5 तत्व हैं। जब पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार आपको सूची पर इटरेट करना पड़ता है और प्रत्येक आइटम को व्यक्तिगत रूप से एक्सेस करना होता है। मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं संख्याओं की एक सूची घोषित कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हम इस सूची को प्रिंट करें, यह ठीक वैसे ही निकलता है जैसे हमने लिखा था, वर्ग कोष्ठक संकेतन का उपयोग करते हुए। लेकिन क्या होगा यदि हम प्रत्येक आइटम को अलग पंक्ति पर प्रिंट करना चाहते हैं? वहीं पर हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं।
तो हम पूरी सूची को प्रिंट नहीं करने जा रहे हैं, इसके बजाय हम फॉर टाइप करने जा रहे हैं। अब हम एक वेरिएबल घोषित करते हैं जिसे लूप वेरिएबल कहा जाता है। इसे आइटम कहते हैं। फिर हम टाइप करते हैं संख्याएं। इसके बाद कोड का एक ब्लॉक प्रारंभ करने के लिए एक कॉलन जोड़ते हैं। इसे हम फॉर लूप कहते हैं। इस फॉर लूप के साथ हम इस सूची के सभी आइटम को पार कर सकते हैं। प्रत्येक पुनरावृत्ति में इस आइटम वेरिएबल में एक मान होगा, इसलिए पहली पुनरावृत्ति में आइटम 1 के बराबर होगा, दूसरी पुनरावृत्ति में यह 2 के बराबर होगा और इसी तरह। तो अब अगर आप आइटम प्रिंट करें और हमारा प्रोग्राम चलाएंगे तो हम प्रत्येक आइटम को एक नई लाइन पर देखेंगे। तो इस प्रकार हम फॉर लूप का उपयोग करते हैं। अब हम वही चीज एक फाइल लूप का उपयोग करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोड थोड़ा लंबा होगा, मुझे आपको दिखाने दो। इसलिए हमें अपने फाइल लूप के बाहर एक लूप वेरिएबल घोषित करके शुरू करना होगा। मान लें आई, हम इसे 0 पर सेट करते हैं। अब हम कहते हैं जबकि आई कम है, यहां हमें पता लगाना है कि इस सूची में कितने आइटम्स हैं। इसके लिए हम लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं, नंबर्स का लेन। तो जब तक आई लिस्ट की लंबाई से कम है प्रिंट करें। अब हम इस इंडेक्स पर एलिमेंट प्राप्त करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई का नंबर। अब हमें आई को 1 से बढ़ाना है, तो आई बराबर आई प्लस 1। चलिए प्रोग्राम चलाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें 1 से 5 तक की संख्याएं मिलती हैं। ये हमारे फॉर लूप से आ रही हैं। और फिर हमें नंबर 1 से 5 तक एक बार फिर मिलते हैं। ये हमारे वाइल लूप से निकल रहे हैं। अब अगर आप इन दो दृष्टिकोणों की तुलना करें तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि फॉर लूप का उपयोग करके निष्पादन छोटा और समझने में आसान है। हमें वर्गाकार कोष्ठक पदान का उपयोग नहीं करना पड़ता, हमें लंबाई फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, हमें एक वेरिएबल, एक लूप वेरिएबल को घोषित करने और फिर इसे स्पष्ट रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पुनरावृत्ति में फॉर लूप के साथ आइटम वेरिएबल स्वचालित रूप से एक मान रखेगा। इस सूची में मान। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में रेंज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हम रेंज फंक्शन का उपयोग संख्या के अनुक्रम को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो टाइप करें रेंज। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे प्रिंट और इनपुट फंक्शन। यहां हम 5 जैसे वैल्यू पास कर सकते हैं और ये एक रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एक रेंज ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नंबरों का सीक्वेंस स्टोर कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं। तो इसे नंबर कहकर बुलाते हैं। तो ये एक रेंज ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास 0 से 5 तक के नंबर होंगे, लेकिन 5 शामिल नहीं होगा। अब अगर हम प्रिंट करें संख्याएं, इस संदेश को देखने जा रहे हैं 0 से 5 की श्रृंखला, वास्तविक संख्याएं नहीं, क्योंकि ये एक श्रेणी ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट प्रतिनिधित्व है। वास्तविक संख्याएं देखने के लिए हमें इस श्रेणी ऑब्जेक्ट को एक फॉर लूप का उपयोग करके इटरेट करना होगा। ये पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक लिस्ट पर फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर लूप का उपयोग करके एक रेंज ऑब्जेक्ट पर भी इटरेट कर सकते हैं। मूल रूप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं जो वस्तुओं की एक अनुक्रमणिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो नंबर प्रिंट करने के बजाय हम नंबर इन नंबर्स कॉलन के लिए एक फॉर लूप का उपयोग करेंगे। हम नंबर प्रिंट करेंगे। देखें, अब हम संख्या 0 से 4 तक देख रहे हैं। रेंज ऑफ 5 एक संख्या अनुक्रम उत्पन्न करता है जो 0 से शुरू होकर यहां निर्दिष्ट संख्या तक जाता है। अब यदि हम 2 मान प्रदान करते हैं तो पहला मान शुरुआती मान माना जाएगा और दूसरा मान अंतिम मान माना जाएगा और इसे बाहर रखा जाएगा। इसलिए 5 से 10 का रेंज 5 से 9 तक की संख्याएं उत्पन्न करेगा। देखो, ये लीजिए। अब हम एक तीसरी वैल्यू भी दे सकते हैं और ये स्टेप के रूप में काम करेगी। तो मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9 की सीक्वेंस के बजाय हम 2 नंबर एक बार में जंप करना चाहते हैं। तो 5, 7, 9 और इसी तरह यहां हम 2 को स्टेप के रूप में पास करते हैं। देखिए, तो हमें यह विषम संख्या मिलती है 5, 7 और 9। यह पाइथन में रेंज फंक्शन है। अक्सर आप देखेंगे कि रेंज फंक्शन का उपयोग एक फॉर लूप के हिस्से के रूप में किया जाता है, क्योंकि हमें परिणाम को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम रेंज फंक्शन को यहीं पर कॉल कर सकते हैं। जहां हम नंबर्स वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं तो हम 5 की रेंज टाइप कर सकते हैं और यह 0 से 4 तक के नंबरों को रखने वाला एक रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखिए, ये लीजिए। इसलिए हमें वास्तव में परिणाम को एक अलग वेरिएबल में सहेजने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि संख्याएं। यह लीजिए। इस ट्यूटोरियल में
हम पाइथन में ट्यूपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ट्यूपल्स कुछ हद तक लिस्ट्स जैसे होते हैं। हम इनका उपयोग ऑब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंस स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि हम इन्हें एक बार बनाने के बाद बदल नहीं सकते। मुझे आपको दिखाने दीजिए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नंबरों की लिस्ट से, 1, 2, 3। अब हम एक लिस्ट को परिभाषित करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग करते हैं और पैरेंथेसिस का उपयोग एक ट्यूपल को परिभाषित करने के लिए करें। अब ये नंबर वेरिएबल एक ट्यूपल को स्टोर कर रहा है। अगर हम फिर से सौंपने की कोशिश करें, मान लीजिए पहला तत्व, हमें एक एरर मिलेगा। ट्यूपल ऑब्जेक्ट में आइटम असाइनमेंट का समर्थन नहीं है। तो मेरा मतलब यही था कि ट्यूपल अपरिवर्तनीय होती हैं, वे अचल होती हैं। इसके अलावा अगर आप नंबर्स डॉट टाइप करते हैं तो आपको अपेंड, इंसर्ट, रिमूव और इस तरह के कोई मेथड नहीं दिखाई देंगे। हमारे पास केवल काउंट और इंडेक्स हैं। काउंट किसी तत्व की घटनाओं की संख्या लौटाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास इस ट्यूपल में 2 3s हैं और हम काउंट ऑफ 3 कॉल करते हैं तो यह 2 लौट आएगा। दूसरी विधि जो हमारे पास है वह है इंडेक्स, और यह दिए गए तत्व की पहली उपस्थिति का इंडेक्स लौटाता है। अब ये दूसरे मेथड्स जिन्हें आप यहां देखते हैं, जो एक अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, इन्हें मैजिक मेथड्स कहा जाता है। ये एक एडवांस टॉपिक है और मैंने इसे अपने कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में विस्तार से कवर किया है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। तो ट्यूपल्स अपरिवर्तनीय होती हैं, हम उन्हें बनाने के बाद बदल नहीं सकते। अब व्यावहारिक रूप से ज्यादातर समय आप सूचियों का उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है जब आप वस्तुओं की एक सूची बनाते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में या कोई और गलती से उस सूची को संशोधित न कर दे। यदि ऐसा है तो आपको ट्यूपल का उपयोग करना चाहिए। अरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी एक ऑनलाइन कोडिंग स्कूल है codewithmosh.com पर, जहां आप वेब और मोबाइल डिवाइसेस पर बहुत सारे कोर्सेज पा सकते हैं। वास्तव में मेरे पास एक संपूर्ण पाइथन कोर्स है जो आपको पाइथन की बेसिक्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ सिखाता है। इसलिए अगर आप यह ट्यूटोरियल देखने के बाद और अधिक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पाइथन कोर्स को देख सकते हैं। इसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी और एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है जिसे आप अपने रिज्यूमे में जोड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। हे मार्शल, हे मार्शल, हाँ 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 हाँ। There are times that we may want to repeat a task a number of times. For example, let's say we send a message to a user. If that message cannot be delivered, perhaps we want to retry 3 times. Now, for simplicity, let's imagine this print statement is equivalent to sending a message. In a real-world program, to send a message to a user, we have to write 5 to 10 lines of code. Now, if you want to retry 3 times, we don't want to repeat all that code. That is ugly. That's when we use a loop. We use loops to create repetition. So here's how it works. We start with for, number, in. We have a built-in function called range. Now, how many times we want to repeat this task? Let's say 3 times. So we call range and pass 3 as an argument. Now, similar to our if statements, we need to terminate this line with a colon, enter, we get indentation. So in this block, we can write all the statements that should be repeated 3 times. Let's do a print, a message like attempt. Save the changes, run the program. So we have attempt printed 3 times, beautiful. Now, what is this number? Let's take a look. It's a variable of type integer. So let's pass it as the second argument to the print function, number, run the program. This is what we get, 0, 1, 2. So here we have a for loop. This for loop is executed 3 times. In each iteration, number will have a different value. Initially, it will be 0. In the second iteration, it will be 1. And finally, in the last iteration, it will be 2. Now here we can do something fun. We can add 1 to this, run the program, and now the messages that we print are kind of more meaningful or more user-friendly, like attempting number 1, attempting number 2, and so on. We can take this to the next level. So we can pass another argument. Here I'm going to add an expression. One more time, number plus 1. So we'll get 1, 2, 3. Now I want to put this expression in parentheses. So let's select this, put it in parentheses, and then multiply it by a dot. So here we have a string that is multiplied by a number. The result will be that string repeated
that number of times. Let's take a look. So run the program. See? That's pretty cool, isn't it? Now let me show you one more thing before we finish this lecture. As you saw, this range function generates numbers starting from 0 all the way up to this number here, but it doesn't include this number. Here we can pass another argument, say start from 1 and finish before 4. With this change, we don't need to add 1 to number every time, because in the first iteration, this number variable will be set to 1. So we can simplify our code and make it cleaner. Let's run it one more time. We get the exact same result. We can also pass a third argument as a step. So I'm going to change the second argument to 10 and pass 2 as a step. Look at the result. These are the numbers we get, 1, 3, 5, and so on. So pretty useful. You're going to use this function a lot in real-world applications. Continuing with the example from the last lecture, let's imagine the scenario where after the first attempt, we can successfully send the message. In that case, we want to jump out of this loop. We don't want to repeat this task of sending a message 3 times. Let me show you how to implement this. So in this demo, I'm going to simulate the scenario where we can successfully send a message. So we define a variable successful and set it to true. Now here, after this print statement, we'll have an if statement, if successful, colon, then perhaps we can print successful. Now here we want to jump out of this loop. For that, we use the break statement. Let's run this program and see what happens. So there you go. After the first attempt, we are successful and there are no more attempts. So once again, I want you to pay great attention to the indentation here because that's one of the common issues amongst beginners. So here's our for loop. These 2 lines are indented with 4 spaces and they belong to our for loop. In every iteration, these 2 lines will be executed. Now, when we get to line 4, if this condition is true, then these 2 lines will be executed because both these lines are indented below this if statement. Now, let's take this program to the next level. What if we attempt 3 times and we still cannot send an email? Perhaps we want to display a different message to the user. We say, hey, we tried 3 times, but it didn't work. So I'm going to change successful to false. Now, at the end, here we can add an else statement. This is what we call a for else statement. What we put under this else statement will only be executed if this loop completes without an early termination. So if we never break out of this loop, then the else statement will be executed. So here we can print a message like attempted 3 times and failed. So run the program. See what we get. 3 attempts followed by this message, attempted 3 times and failed. In contrast, if we change successful to true, because we terminate this loop using this break statement, what we have in the else block will not be executed. Take a look. Run the program. We have 1 attempt, successful, done. In programming, we have this concept called nested loops. So we can put one loop inside of another loop, and with this, we can get some interesting results. Let me show you. So I'm going to start with this loop for x in range 5, colon. Now, inside of this loop, I'm going to add another loop. So for y in range 3, colon. And then in our second loop, I'm going to add a print statement. Here we can use formatted strings to display coordinates. Remember formatted strings? So we have f followed by quotes. Now here we add parentheses for our coordinates. First, we want to display x and then comma followed by y. Let's run this program and see what happens. There you go. Pretty cool, isn't it? So we get 0 and 0, 0 and 1, 0 and 2. Then we get 1 and 0, 1 and 1, 1 and 2,
and so on. Now let me explain how exactly Python interpreter executes this code. So here we have two loops. This is what we call the outer loop, and this is the inner loop. So the execution of our program starts here. In the first iteration of this loop, x is 0. Now we get to this statement, which is a child of this for statement because it's indented 4 times. This statement itself is a loop. So what we have inside of this loop will be executed 3 times. In the first iteration, x is 0 because we're still in the first iteration of the outer loop. And y is also 0 because we're in the first iteration of the inner loop. That is why we get 0 and 0. Now we go to the second iteration of this inner loop. In this iteration, y will be 1, whereas x is still 0. That is why we get 0 and 1. And similarly, in the third iteration of our inner loop, we'll get 0 and 2 in the terminal. Now we're done with the execution of the inner loop, so the control moves back to our outer loop. Here we'll be in the second iteration, so x will be 1, and then we start here again. So we have to execute this inner loop 3 times. In the first iteration, y will be 0, and x is 1. So here we have 1 and 0, then we'll get 1 and 1, and 1 and 2. You got the point. So this is all about nested loops. So you have learned how to use for loops to repeat one or more statements in your programs. Now let's dive deeper and see what this range function returns. So earlier you learned about the built-in type function. With this function, we can get the type of an object. So if I pass 5 here and run this program, this is what we get. So the type of this number or this object is int or integer. Now let's look at the type of the value that we get from the range function. So as an argument, we pass range of a number. Let's run this program. So this range function returns an object of type range. So in Python, we have primitive types like numbers, strings, and booleans, but we also have complex types. Range is an example of one of those complex types. Throughout this course, you're going to learn about a lot of other complex types. Now, what is interesting about this range object is that it's iterable, which means we can iterate over it or use it in a for loop. That is why we can write code like this. So this range function returns a range object which is iterable, which means we can iterate over it. In each iteration, x will have a different value. Now, range objects are not the only iterable objects in Python. Strings are also iterable. So here we can add a string like Python. Now in each iteration, x will hold one character in this string. Let me show you. So print x, and I'm going to delete these 2 lines here. Let's run this program. So in each iteration, we'll get one character and print it. We have another complex type called list, which we use to store a list of objects. So we add square brackets. This indicates a list. Now we can add a list of numbers or a list of strings, like a list of names. You will learn about lists later in the course. So let's run this one more time. As you can see, we can iterate over lists. In each iteration, we'll get one object in this list. Now later in the course, I will show you how to create your own custom objects that are iterable. For example, you will learn how to write code like this. For item in shopping cart, print item. So shopping cart is going to be a custom object that you will create. It's not going to be an integer or a string or boolean. It's a custom object. It has a different structure. And we'll make it iterable so we can use it in a for loop. And in each iteration, we can get one item in the shopping cart and print it on the terminal. All right, time for an exercise. I want you to write a program to display the even numbers
between 1 to 10. So when you run this program, you should see 2, 4, 6, and 8. And after these, I want you to print this message. We have 4 even numbers. Now here's a quick hint before you get started. You should call the range function with 1 and 10. Do not use the third argument, which is called step. So basically, I want you to iterate over all the numbers between 1 to 10. Check if each number is an even number and then print it on the terminal. So pause the video, spend 2 minutes on this exercise. When you're done, come back, continue watching. So we start with a for loop for number in range 1 to 10, colon. We check to see if the remainder of division of this number by 2 equals 0. So if number modulus 2 equals 0, then we print this number. Now let's run this program. So we get 2, 4, 6, 8. Beautiful. Now to count the even numbers, we need a separate variable. So let's call that count. Initially, we set it to 0. Now in this if block, every time we find an even number, we need to increment count. So we set count plus equals 1. And finally, after our for loop, we can print a formatted string. We have count even numbers. Let's run the program, and here's the result. Hi guys, thank you for watching this tutorial. My name is Mosh Hamadani, and I have tons of tutorials like this for you on my channel. So be sure to subscribe, and also please like and share this video. If you want to learn Python properly from scratch with depth, I have a comprehensive Python tutorial for you. The link is below this video, so click the link to get started. Thank you and have a fantastic day. So far, you have learned how to use some of the built-in functions in Python, such as print, round, and so on. In this section, you're going to learn how to write your own functions. Now, you might ask, but why do we even need to write our own functions? Well, when you build a real program, that program is going to consist hundreds or thousands of lines of code. You shouldn't write all that code in one file like we have done so far. You should break that code into smaller, more maintainable, and potentially more reusable chunks. You refer to these chunks as functions. So let me show you how to create your own custom functions. We start with the def keyword, which is short for define. Next, we need to give our function a name. So let's call this greet. All the best practices you learned about naming your variables also apply to naming your functions. So make sure your function names are meaningful, descriptive. Use lowercase letters to name your functions, and an underscore to separate multiple words. Now, after the name, we need to add parentheses. You will see why shortly. And then we'll add a colon. Now, what is going to happen? You know it. We're going to get indentation, which means the following statements will belong to this function. So here I'm going to add 2 statements. Hi there, and welcome aboard. Both these lines belong to this function because they're indented. Now we're done with this function, we need to call it. So we remove the indentation and we add 2 line breaks after this function. This is what PEP8 recommends to keep our code clean and maintainable. Now if you forget to add 2 line breaks, don't worry. As soon as you save the changes, AutoPEP8 will automatically add these line breaks for you. Let me show you. So I'm going to remove these line breaks and call this function greet with parentheses, just like how we call the built-in functions. Now save the changes. There you go. So we get 2 line breaks after our function. Now let's run this program. So we get these 2 messages on the terminal. Now here's a question for you. What is the difference between the greet and print functions? The difference is that this print function takes an input, whereas our greet function doesn't take any inputs.
So let me show you how to pass inputs like first name and last name to this function. When defining a function, in between parentheses, we list our parameters. So here we add two parameters like first underline name and last underline name. Now, when calling this function, we need to supply two values for those parameters. We refer to them as arguments. So, Mosh, Hamedani. These are the arguments to the greet function. That's one of the terms that a lot of developers out there don't know. They don't know the difference between parameters and arguments. A parameter is the input that you define for your function, whereas an argument is the actual value for a given parameter. Okay, now let's change line 2. And instead of saying hi there, we can greet a person by their full name. So we can convert this to a formatted string and pass two fields here, first name as well as last name. Save the changes, run the program, and this is what we get in terminal. Now this function is more useful. We can reuse it and call it with different arguments. So let's greet John Smith as well. Run the program. So we get hi Mosh Hamedani and hi John Smith. Now note that by default, all the parameters that you define for a function are required. So here our greet function takes two parameters. If I exclude one of these arguments and save the changes, you can see we have this red underline. So Pylint is complaining and saying there is no value for argument last name. Also, if we run the program, we get this type error, greet missing one required positional argument. So let's put this back. Now later I will show you how to define optional parameters. So this is the simplified version of this greet function we created earlier. Now in programming, we have two types of functions. Functions that perform a task and functions that calculate and return a value. Here are some examples. Both the print and greet functions are examples of type 1. They're performing a task, which is printing something on the terminal. In contrast, the round function is an example of a function that calculates and returns a value. So the functions that you create fall into these two categories. Now let me show you how to rewrite this greet function, but in the second form. So instead of printing this string on the terminal, we simply return it. Let me show you. So I'm going to delete all this code, define a new function, but call it get underline greeting. We add the name parameter and simply return this formatted string hi name. That's all we have to do. So we use the return statement to return a value from this function. Now we can call this function get underline greeting, pass a name like Mosh. Because it returns a value, we can store that value in a separate variable like message. Now you might be curious, which form of these greeting functions is better? Well, with this first implementation, we are locked to printing something in the terminal. In the future, if we want to write that message in a file or send it in an email, we have to create another function. So we cannot reuse this greet function in other scenarios. In contrast, this second form is not tied to printing something on the terminal. It simply returns a value. Now we get this value and we can do whatever we want with it. We can print it on the terminal, or we can use the built-in open function to write this message to a file. So we can create a file like content.txt, open it for writing. This returns a file object, and then we can call file.write message. Now don't worry about these two lines. Later in the course, I'm going to talk about working with files. But what I want you to take away here is that we have this message variable and we can do whatever we want with it. We can print it on the terminal, write it to a file, send it in an email, and so on. And one more thing before we finish this lecture. So here's our greet function. And as you can see, we're simply printing a string. Now, if we call greet, give it a name, run the program, we get this message, hi Mosh.
But what if we put this inside of a call to the print function? Let's see what we get. We get hi Mosh followed by none. What is this? None is the return value of the greet function. So in Python, all functions by default return the none value. None is an object that represents the absence of a value. Later in the course, you're going to learn more about none. What matters now is that all functions return none by default unless you specifically return a value. So here, if we return some string, none will no longer be returned. Now, I just want to clarify something. Earlier, I told you that we have two types of functions in programming, functions that carry out a task or functions that calculate and return a value. So back to the code we previously had. So even though this function returns none by default, it is still classified as a function that carries out a task. Let's create another function. We call it increment. We want to use this function to increment a number by a given value. So here we simply return number plus by. Now we can call this function like this. Increment 2 and 1, like result, and then print it on the terminal. Let's run the program. We get 3, beautiful. Now we can simplify this code. We have used this result variable only in a single place, that is line 6. So we don't really need it. So on line 6, we can replace result with a call to increment function, like this. So when Python interpreter executes this code, first it will call the increment function. It will get the result and temporarily store it in a variable for us. We don't see that variable. And then it will pass that variable as an argument to the print function. Now, if we run this program, we get the exact same result. Beautiful. Now we can make this code more readable. If someone else looks at line 5, they may not know exactly what these arguments are for. We can use a keyword argument to make this code more readable. So this 1 here is the value of this by parameter. We can prefix it with the name of the parameter like this. Now we can read this code almost like plain English. Increment 2 by 1. So if you're calling a function with multiple arguments and it's not quite clear what these arguments are for, you can make your code more readable by using keyword arguments. So here, by equals 1 is a keyword argument. Earlier, I told you that all the parameters that you define for a function are required by default. In this lecture, I'm going to show you how to make the by parameter optional. So let's say we don't want to explicitly pass by equals 1 every time we want to call this increment function. We want to use this function to increment a value by 1. So we remove the second argument. Now we need to give this parameter a default value. So we set it to 1. Now, if we call this function and don't supply the second argument, this default value will be used. Otherwise, the value that we specify here will be used. Let me show you. So we run this program. The result is 3. But if we pass the second argument here, we'll increment 2 by 5. So we will get 7. So you can see it's pretty easy to make a parameter optional. Just be aware that all these optional parameters should come after the required parameters. In other words, I cannot add another required parameter here. Let's call that another. I cannot add that here. If I save the changes, you can see we get a red underline here. So all the optional parameters should come after the required parameters. Now, obviously, in this case, we don't need the second parameter, so let's delete it. There are times that you may want to create a function that takes a variable number of arguments. Here is an example. Let's define this function, multiply, that takes 2 parameters, x and y.
and simply returns x times y. Now we can call this function like this. So far, so good. But what if you want to pass 1 or 2 more arguments here? That doesn't work because our multiply function takes only 2 parameters. To solve this problem, we need to replace these 2 parameters with a single parameter. We use a plural name here to indicate that this is a collection of arguments. And then we prefix it with an asterisk. This is the magical part. Let me show you what happens when you use an asterisk here. So temporarily, let's delete this line and simply print numbers. Let's see what we get here. So run the program. We can see all our arguments and they're packed in parentheses. What is this? Well, earlier you learned about lists. I briefly mentioned that you can use square brackets to create a list of objects like 2, 3, 4, 5. Now later in the course, we have a comprehensive section about lists. So don't worry about the details of lists and how they work. But what I want you to note here is that the only difference between this list and what we have here is in the notation. So we use square brackets to create lists and parentheses to create tuples. Some people call it tuples or tuples. So a tuple is similar to a list in that it's a collection of objects. The difference is that we cannot modify this collection. We cannot add a new object to this tuple. Once again, later in the course, we're going to have a comprehensive section about lists, tuples, and other data structures. What matters now is that these tuples, just like lists, are iterable. So we can iterate over them, which means we can use them in loops. Let me show you. So let's write for number in numbers, colon. Let's just print one number at a time. Actually, we don't need this line, so delete and run the program. So we iterate over this tuple, and in each iteration, we get one number and print it on the terminal. So now with a simple change, we can calculate the product of all these numbers. All we have to do is to define a variable like total. Initially, we set it to 1, and then in each iteration, we get total and multiply it by the current number. Or we can rewrite this statement using an augmented assignment operator. So total times equal number. Line 5 and 4 are exactly identical. So I'm going to use line 5 because it's shorter and cleaner. Delete. And finally, we'll return the total. Now, one of the issues I see often in beginners code is that they don't use this indentation properly. So they put the return statement here, and then they wonder why their function doesn't work properly. If you put the return statement here, it will be part of the for loop. So it will be executed in each iteration. In this case, after the first iteration, because of this return statement, will return from this multiply function. So the total will not be calculated properly. We need to put this at the same level of indentation as other statements in this function. So here we have our for statement. We loop over all the numbers, we calculate the total, and then finally return it. So with this implementation, we can get the result and print it on the terminal. Let's run the program, and you can see the product of these numbers is 120. So in the last lecture, you learned the syntax to pass a variable number of arguments to a function. We have a variation of this syntax with double asterisk, and that's what I'm going to show you in this lecture. So for this demo, let's rename this function to save underline user and rename the argument to user. So let's imagine we're going to use this function to save information about a user. Now, in this function, let's just print this user argument. We're done with our function. Let's call it save underline user. Now, instead of passing arbitrary arguments here, we can pass arbitrary keyword arguments. Remember keyword arguments? So we have name equals value. So here we can add multiple keyword arguments like ID equals 1, name equals John,
age equals 22, and so on. So we are passing 3 keyword arguments to this function. Now let's run this program. This is what we get. Look at the syntax. We have these curly braces, and in between them, we have multiple key value pairs. So key colon value, comma, here's another key value pair, and here's the last one. This object you see here is called a dictionary. It's another complex type or a data structure in Python, and I'm going to talk about that in detail later in the course. For now, all I want you to take away is that when we use double asterisk here, we can pass multiple key value pairs or multiple keyword arguments to a function, and Python will automatically package them into a dictionary. So this user object here is a dictionary. Now using the bracket notation, we can get the value of various keys in this dictionary. So we can print user, square brackets, we pass a string, and this is the name of our key, like ID. Let's run the program. We get 1, or we can access the value of name key, run the program. So name is John. So this is how dictionaries work. In programming, we have a very important concept called scope, which refers to the region of the code where a variable is defined. So in this example, we have this message variable. The scope of this variable is the greet function. It only exists inside of this function. So if we go outside of this function and try to print message, see what happens. As soon as I save the changes, we get this red underline, undefined variable message. And if we run our program, we get this name error. Name message is not defined. The same rule applies to the parameters of our functions. So if we add a name parameter here and then try to print it outside of the greet function, we get the same error. So the scope of the name and message variables are the greet function, and we refer to these variables as local variables in this function. They're local in this function, which means they don't exist anywhere else. And that means we can have another function, let's say send email, with a parameter with the same name. Here we can have a message variable, but this message variable is completely different from the message variable we have in the greet function. And of course, the same rule applies to the name parameters in these functions. They are completely separate. These local variables have a short lifetime. So when we call, let's say, the greet function and pass a name, Python interpreter will allocate some memory and have the name and message variables reference those memory locations. When we finish executing the greet function, because these variables are not referenced or used anywhere else, eventually they get garbage collected, which means Python interpreter will release the memory that allocated for these variables. So these are the local variables. In contrast to local variables, we have global variables. So if we move this message variable outside of the greet function, now it's a global variable, which means it's accessible anywhere in this file. So the scope of this variable is this file. We can use it anywhere in this file, in any functions or outside of a function. Now, for this reason, global variables stay in memory for a longer period of time until they are garbage collected, and you should not use them that often. In fact, global variables are really evil. So as a best practice, create functions with parameters and local variables. Now, what if here in the greet function, we set message to, let's say, B. Now, let's delete this second function. We don't really need it for now. So we call the greet function. In this function, we assign a new value to the message variable. Now let's print this message and see what we get. What do you think we're going to get? Well, let's take a look. We get A. But didn't we change the value of message variable to B? Not really. Because by default, Python interpreter treats this message variable as a local variable in the greet function, even though it has the same name as the global variable that we have on line 1. So these two variables are separate. Now, I have seen some tutorials or even books teaching you bad practices. For example, they show you how to modify the value of this global
message variable inside of a function. Let me show you how to do that. But remember, this is a bad practice and you should avoid it at all times. I will explain the reason in a second. So these tutorials or books teach you to use the global keyword here and reference the message variable. When Python interpreter sees this line, it will realize that in this function, we want to use the global message variable. So it will not define a local variable in this function. Now with this change, if we run our program, you can see we get B on the terminal because in this function, we are modifying the value of the global message variable. Why is this bad? Because it is possible that you might have multiple functions that rely on the value of this global variable. If you accidentally or deliberately change the value of this global variable in one function, this might have a side effect in other functions. Those functions may not behave properly. And this way we can create a bug in our program. So global variables have always been bad. This is not a Python thing. This is a discussion that's been going on for decades. Avoid them as much as you can. Or if there are situations that you really need to define a variable globally in a file, that's okay, but do not modify it in a function as you see here. This is a really bad practice. So that's all about local and global variables. One of the questions that often comes in programming interviews is the fizz-buzz algorithm. You might be surprised that there are a lot of developers out there with even years of experience, but they don't know how to solve this simple programming problem. That's why I decided to include this in my course. So let's see how this algorithm works, and then you can spend 10 to 15 minutes on this exercise on your own. So here we have a function, fizz-buzz, that takes an input, and depending on the input we give it, it returns different results. Here are the rules. If the input that we give it is divisible by 3, it will return the string fizz. Let me show you. So we run this program, we get fizz. If the input is divisible by 5, it will return buzz. Take a look. Here's buzz. Now the third rule. If the input is divisible by both 3 and 5, it will return fizz buzz. So let's pass 15 here. We'll get fizz buzz. For any other numbers, it will return the same input. So if I pass 7, it's not divisible by 3 or 5, it will return 7 itself. So spend 10 to 15 minutes on this exercise. You will see my solution next. All right, let's see how we can solve this problem. So we get the input and check to see if input is divisible by 3. Then we can set a variable like result to fizz. Now let me temporarily simplify these rules because I want to show you a really cool technique. So let's imagine if the input is divisible by 3, we'll return fizz. Otherwise, we'll return buzz. So else colon, we set the result to buzz, and finally we'll return this result variable. This is one way to implement these rules, but it's not the best way. There is a better and cleaner way. Let me show you. So instead of defining this result variable and then returning it, we can simply return this string here and also here, and then we can get rid of line 6. So we remove one unnecessary line of code. This was one technique. The other technique I want to show you is when you have an if statement and in your if block, you're returning a value, you don't really need an else clause. Because if this condition is evaluated to false, the control moves to the else clause, and all we are doing here is returning a different value. So this is the only possible outcome. So here we can remove this else clause and simply return buzz. So with this technique, I removed an unnecessary indentation as well. I've made our code more linear, okay? Now, let's go back to our original algorithm. So if the input is divisible by 3, we'll return fizz.
Now we check to see if the input is divisible by 5, we'll return buzz. So here, we don't really need an elif, because if this condition is false, we'll get here anyway. So we can check if input is divisible by 5, we will return buzz. Once again, if this condition is false, the control moves here. Now we check to see if the input is divisible by 3 and it is also divisible by 5, then we will return fizz buzz. Now, this expression is a little bit long. I would prefer to make it more readable by putting parentheses around the first and second parts, like this. That is cleaner. Now, if this condition is also false, the control moves here. That means our number is not divisible by 3 or 5, so we should simply return the same input. Once again, we don't need an else or another if. We simply return the input. Now let's run this program and see if it's working properly or not. So we call our function with 3 and we get fizz, beautiful. Let's call it with 5. We get buzz, perfect. What if we call it with 15? We should get fizz buzz. However, we get fizz. What is going on here? The reason this happened was because when we pass 15 here, line 2 is executed. Obviously, 15 is divisible by 3, so that is why we immediately return fizz. To solve this problem, we need to move this condition, which is more specific, to the top. So I've selected these two lines using Alt and up. I move these lines up, beautiful. All right, now let's run the program one more time. So we get fizz buzz. Once again, let's test it with 3. Now we get fizz. Let's test it with 5. When writing functions, don't assume that your function is working. Make sure to test it with all different kinds of values. Let's test it with 5. We get buzz, beautiful. What if we pass 7, which is not divisible by 3 or 5? We get 7, beautiful. Hi guys, thank you for watching this tutorial. My name is Mosh Hamadani and I have tons of tutorials like this for you on my channel. So be sure to subscribe and also please like and share this video. If you want to learn Python properly from scratch with depth, I have a comprehensive Python tutorial for you. The link is below this video, so click the link to get started. Thank you and have a fantastic day. Now, before we get started, please subscribe to our channel and turn on notifications by clicking on the bell icon. Let's go through what we will be covering in today's session. We will firstly go through a brief history of Python and what it is, following which we will see the different features that Python provides us along with those who use Python in the industries. Once we are clear with these topics, we shall dive straight into the Python basics where we shall cover the different data types such as numeric, lists, tuples and many more, the operators in it, and later understand how flow control works and how we can manipulate it using loops and conditions. Following which, we will learn how to write functions and see some of the inbuilt functions that Python has. Later, we will be ending our session with file handling, where we learn how to read and write data to and from a file. So I hope all of you are clear with the agenda for today. Can I please get a confirmation message in the chat box? So now without any further ado, let's get started with the first topic of today's session. The first topic for today's session is what is Python. Python is a general purpose programming language which can be used for almost anything, may it be to develop web pages or for machine learning or any sort of simple application. Python has you covered. So you would wonder, where did it all start? In the 1980s, Guido van Rossum wanted to make a language that was beautiful to look at and easy for everybody to read. So as a hobby, he started to make a language which would use indentations instead of braces, because of which the code became distinguishable and all the more readable. He named it after the creator of his favorite show, Monty Python, and released it in 1989. Python has gained popularity recently with the rise of machine learning and artificial intelligence, as Python makes code writing easy and efficient. So, formally saying,
Python is a high-level interpreted language which has easy syntax and dynamic semantics. So what do these four keywords mean? Well, high-level means that Python derives components from the natural language that we humans use to communicate with each other. This makes it easier for anybody to try and relate what exactly could be happening without the burden of going through tons of machine code. Interpreted means that the Python code is compiled line by line, which makes debugging errors much more easier and efficient. But this comes at a cost, as Python is much more slower than other programming languages. Python has easy syntax because it makes use of indentations instead of braces to distinguish what block of code comes under which class or function. This makes the code much more distributed and easy for anybody to read. Python has dynamic semantics, meaning that you do not need to initialize anything before using it. Python does all of that dynamically. So I hope you have a clear idea of what is Python. Let us go ahead and understand the different features that Python provides us. So as you can see, Python has a variety of features that it provides us. Let us go ahead and understand each of these one by one. The most well-known feature of Python is its simplicity. Python has made programming fun because it is simple. It makes you think more for obtaining the solution of your problem rather than thinking for the syntax of your code. The next important feature is that Python is an open source language, which means that it is free for anybody to use. You can also modify Python accordingly so that it better benefits your needs without any repercussions. Which brings us to our next feature, portability. Python supports portability, which means that you can write your code and share it with your team members or anybody that you want to, and it would run the same way as it does for you. This makes it really helpful when you are working on an application with a team of people. Our next feature are the embedding properties. There may be chances that certain languages perform certain functions better than Python, but that does not stop you, as Python allows you to add the code of those particular languages within itself, which makes Python all the more powerful. With that, let us move over to the next feature, interpretation. Python is interpreted line by line, which means that the management of memory and CPU is much more efficient and easy. A whole program may take up a lot of memory, but Python would take away the block of code that has already been executed. This frees up memory and makes the code run much more better. Now, if you are wondering whether Python is the language to get started off with, let me tell you that it is. Which brings us to the next feature, library support. Python has a huge library support, which would help you to obtain solutions to your problems easier and much more efficiently. You can get started off with data science or web development on the go with Python. You may have also had questions like, how do developers make applications that are so well related to a particular domain? That is because of object-oriented concepts. Python also supports OOPS, meaning that you can model a real-world problem into your code, and you can have security for it such that certain features only access those particular data elements. This can help you in replicating real-world problems. So we have gone through the features that Python provides us. Now let us understand the different companies who use Python in the industry. There are thousands and thousands of companies who use Python for their daily business standards. I have just listed a few of those, so let us go ahead and understand how do these companies use Python. We have companies like Google, Dropbox, BitTorrent, Raspberry Pi, National Security Agency, NASA, YouTube, and Netflix. So let us understand how do these companies actually use Python to provide their features. Google uses Python to provide better search features to its users. The Dropbox server and client applications have been coded using Python. The National Security Agency uses Python for cybersecurity analysis and also for encryption and decryption purposes. BitTorrent uses Python to share files between the users. It had started out as a simple Python file and is now an application that millions of users use. Raspberry Pi is a credit-sized computer which promotes Python as its educational language. The scientists at NASA use Python to perform scientific calculations. Netflix uses machine learning to understand and cluster certain groups of its users and recommend them TV shows to retain them for longer. This machine learning is done using Python. YouTube uses Python to provide better searches to its users. So as you can see, Python is a really important language and there are a huge number of companies who use it around the world.
So now, having understood what Python is, what are its features, and who are the companies who use it, let us go ahead and get started off with our Python basics. So to get started off with Python, you would firstly need to install it onto your computer. Head over to python.org and download the latest installer that is available to you. Once the installer has been downloaded, run it and make sure that you check this checkbox, add Python to path. What this will do is it will make sure that Python is installed globally throughout your system and you can access Python from any place that you want to. Then go ahead and click on install now and you will see Python being installed into your system. Once the installation is completed, navigate and you will be able to find Python installed on your computer. Go ahead and open IDLE, which is the bundled development environment with Python. Let us go ahead and write our first program with IDLE. Do not worry if the font size of my IDLE is huge. I have done it so it is visible to you guys much more clearly. It may be small for you. So let us go ahead and write our first program, that is to print hello users, welcome to the basics tutorial, and let me hit enter. And as you can see, I have obtained the output, hello users, welcome to the Python basics tutorial. So it is that simple to write your first program in Python. Let us close this and move back to my presentation. Now for the rest of the tutorial, I will not be using idle because there are chances that I may have errors and it becomes difficult to debug those errors. So instead, I will be downloading PyCharm, which is the IDE for writing Python files. So head over to jetbrains.com/pycharm/download and you can download either the professional version or the community version. For the purpose of the tutorial, I will be downloading the community version because it is free. But if you want, you can even go ahead and download the professional version for a certain amount of fee. I already have PyCharm installed in my computer. So let us go ahead and see how to work with PyCharm and write a few programs with PyCharm. So this is the home page of PyCharm. Let us go ahead and create a new project. Let us go ahead and give a name to this project. Let me say it as demo and click on enter or click on the create button over here. ड्राइवर लेट आ रहा है, थोड़ा वेट करे। अरे आज के टाइम पे वेट कौन करता है? क्या मतलब? Uber's on the way. Uber's on the way? ये अच्छा है तुम लोगों ने फोन उठाया, सीधा गाड़ी दरवाजे पे। हम लोग घर के दरवाजे से बाहर निकलते थे तो ट्रेन, ऑटो। टेंशन मत ले बेटा, इनको दिन के धक्कम दुखी से तो अपन पक्का बनेला है बाबा। क्या रे, इतनी धूप भी पिघल गई क्या? तेरा बाप ऐसे धूप में तप के सोना बना। इतना महंगा भाई, शपथ। एक एक पाए जमा करके तेरे बाबा ने, समझा, लाइफ में स्ट्रगल होना चाहिए। स्ट्रगल तो बहुत है डैड, लाइफ में काफी स्ट्रगल है, पर बाकी सब के लिए उबर है। उबर, लेट्स गो। We're supercharging our remote configs with the release of our JSON editor on Bytebrew. With our new JSON editor and remote configs, we unlock the ability to remotely update a payload to your game within a single key, so you can change multiple game values with just one config. So, what are you waiting for? Sign up now and start using Bytebrew free today. So as you can see, PyCharm has loaded my project. Let me go ahead and show you the files that are in my project. As you can see, there is something called as the VENV, which is the virtual environment. This basically takes care of all the installations of all the packages that you would need in your program. So let us go ahead and create our first project over here. Let me right click on demo and go ahead on new and Python file. And the extension for a Python file is always .py. Let me just go ahead and name this as a demo1 and hit enter. Let me just write a program over here to get a hang of it. So it was hello users,
Welcome to the Python Basics tutorial. Let me go ahead and run this for you guys. So as you can see, I have obtained the output. Hello users, welcome to the Python Basics tutorial. So it's that simple. Let's go ahead and create another program. And let's say this will be used to add two numbers. So add, enter. And let me write this in the presentation mode. So let's see, the first line is a is equal to int of input, enter, number a. B is equal to int of input, enter, number b. And let me just write print the addition of a and b is comma a plus b. So let me go ahead and run this program for you guys. So as you can see, I have two numbers that I have to add over here. So let me just write 5 and 5 over here. Let me enter. And as you can see, the addition of a and b is 10. Now, what is the int over here? What does this do? Well, let me tell you how this actually works. So this is basically a function. So whatever is having parentheses after it. So for example, I have a and I have two parentheses after it. This means that a is a function over here. So this is just showing an error because I have a over here and this is a variable, but variables are not functions. So for example, I have something like add. This is a function. This says that there is unresolved reference, meaning that there is no package that has the name add. So that's a function basically. And you can either give inputs to a function or you can just call the function accordingly. So now here input is a function and int is a function. So just let me remove integer so that I can show you what exactly happens. So input is used to take the user's input and whatever is passed inside will be shown here at the output. So just let me give a space so that it's much more clearer. So let me run the program once again. So I have 5 over here and 5. Let me just hit enter. And as you can see that the addition of a and b is 55. So let me tell you why this happens. Basically the input function, whatever input is taken from the user is taken as a string or it is taken as a character. It is not taken as an integer or a whole number, which is actually used for addition. So if you add 5 and 5, it should be 10. But that is in a number phase. What if those 5 and 5 are characters? So basically it will be 5 preceding with 5. That's the reason you have 55 here instead of 10. So how do you resolve this? I just call the int function, which is used to convert the string, right? These characters that I am passing are string characters. So I am converting the string characters into the integer characters. So let me just go ahead and do this. And now if I run the program and give the same inputs, so I give a 5 over here and 5. Now you can see that I have 10. So that is basically a simple program that can help you to get used to PyCharm. What I am doing here is called as type conversion, meaning that I am changing the data of one type to another data type. So this is basically what happens over here. Let me just come out of the presentation mode and let us move ahead with the next part of our tutorial. So I hope all of you are clear with this. Let me close the project and open up the project that I have ready for you guys so that it does not waste much time for us in typing.
Let me go ahead, PyCharm, Python Basics, open. So as you can see, I have all the different topics that we will be covering, the data types, file handling, flow control, functions, operators, all of this. So let me just close this up and move back to my presentation. Now let us understand what are the different data types that we have in Python. We basically have 6 data types. What do you mean by a data type? A data type is basically the type of data that you are trying to store in Python. So there are 6. So we have numeric, lists, tuples, dictionary, sets, and strings. Let us go ahead and understand each of these data types one by one. So the first data type is the numeric data type. So as the name suggests, the numeric data type is used to store the numeric values. Now you need to know the difference between a value and a variable. So now let me help you understand this with an example. Remember that we had a is equal to 5 or a is equal to 10, something like that, right? Now a is the variable, which means that it is the name, and the value that I pass to it is the value for it. So basically I am giving a name to the value. So the name over here is a, and a is the variable, and the value 10 is the value that I have given to the variable. The other thing that you have to remember are that numeric data types are not mutable. What do you mean by mutation? Mutation is basically change, meaning that the numeric data type cannot be changed. What do you mean by this? Let me help you understand this with an example. So I have a first program over here. Now, as you can see that I have a is equal to 10 and I have a is equal to 20. If I print the value of a, and let me just run this. As you can see, I have obtained the output as 20. But what if I wanted to change a of, as you can see, I am getting an error over here which says that class integer does not define get item, meaning that I cannot change a particular value inside the 20, meaning that if I want to change the 0 of this to some other value, that is not allowed in Python. But if I wanted to change it into 21, this is allowed in Python. So this is what it means by numbers are not mutable. We have 3 data types in numeric data types. These are the integers, floats, and complex. What are integers? Integers are basically integers, whole numbers, positive numbers, negative numbers. We have floating values, which are basically the decimal numbers, and we have complex numbers also in Python. Let us move ahead to the tutorial that I have prepared for you guys, data types, and let's move over to numeric data types. And let me move back to the presentation mode. So as you can see, I have integer data types, I have floating data types, and I have complex numbers. So let me just print it out and let me comment what is not required for now. Let me run the program. So as you can see, these are like simple operations that we are trying to perform here. We have a plus b, that is equal to 10 minus 10, which gives us the output 0. C minus D is 3.142 minus 0.142, which is 3.0, and 10 plus 3j minus 6j, which gives us 10 minus 3j. So these are simple applications over here, but the second one is where it is much more important for you to understand. Let me rerun the program. Now, as you can see, we have A, which is an integer, and C, which is a floating number. Then we have B, which is an integer, and F, which is a floating number. And then we have a simple operation of multiplication, that is A into B. But you would think that if it is an integer and if we are working with a floating number, shouldn't it give us an error? Well, that does not happen. Why is that? This is something known as implicit type conversion. If you remember the previous program that we were doing, where we had int of input, that was converting the string into a integer number. That's the same thing that it happens, but here we do not need to do it explicitly. This is done internally by Python itself. So it converts the a, which is an integer, into a floating number. So a here will be 10.000 up to the 16-digit part, and then minus 3.142. The same goes over here. It will be minus 10 plus 0j minus 6j.
So that is the reason we have the output as 6.85800 up to 5, and then we have -10 -6j. And then the last one is a simple multiplication where we have -100. So I hope you are clear with the numeric data types. So let us go ahead and close this and understand what are type conversions. As you may remember, type conversions are basically used to convert a data type from one form to another. So let me just go ahead and uncomment what is required for now, because if I have the whole program running in a sequence, it becomes really difficult for you guys to understand what's happening. So let me go ahead and run this for you. So I have a string which is 10010. I'm telling that I want to convert it into an integer, and this number that I am wanting to convert into an integer is in the form of a binary number. So that's the reason I get 18, because 10010 in binary is 18. And then we have a floating number, which is converting the string, that is 10010 is converted into a floating number. So it is 10010.000 up to how many other numbers. Let me go ahead and show you some of the more functions that are available to you, which you can use for type conversions. The type conversions that you follow are called as explicit type conversions, and type conversions that Python does by itself are called as implicit type conversions. Let me go ahead and run this for you. So I have a string which is having the value 4 over here, and then I want to convert it into an integer, which is done using the ORD function. So this is now an integer. Now I want to convert 56 into a hexagonal number and 56 into an octagonal number. So that is done using hex and oct functions. So we have 0x38 and 0070, which is 56 in hexadecimal and octal. Let me move ahead and show you some more. And let me just comment up everything and uncomment what is not required. Let me run this. I have a string called edureka, and I am converting it into a tuple, set, and a list. That is what is being done here. I can do this using the tuple function, the set function, or the list function. You will understand more of these later in the tutorial, but for now you can just understand that this is how you convert it into. Let me move ahead and run the program. So as you can see, I have A and B as 1 and 2, and I have a tuple which has A, 1, F, 2, and G, 3. If I want to make a complex number, I can use the complex function and pass the values to it. This will give us the output as 1 plus 2j. Then I want to convert a number into a string. That is done using the str function. So the number that you have here is basically a string, and then you have the dict, which is used to convert it into a dictionary. So I have A1, F2, G3, where A is the key, 1 is the value, F is the key, 2 is the value, G is the key, and 3 is the value. These are just simple examples of how you can use type conversions. Now you may be thinking, where exactly would you want to use type conversions? This may be better understood if I give you a simple example. Think of a company who has the data of their employees in a tabular format, and all of the data is stored in a string. Now, if you remember from the first part of the PyCharm project that we did, that if you do not convert a data, it would be concatenating it into a string, right? So you do not want that because it may give you wrong output that you would not want. So instead of doing that, you just type convert it into an integer or a floating number, and accordingly you can perform your own calculations. So that is one simple example where you would actually use type conversions. There are many which may depend on the application you're working on. So I hope all of you have understood type conversion. Let us move ahead with the next data type, that are lists. What are lists? Lists are the same as arrays with one exception, that they can have different data items inside them. Arrays would only have a particular data item within them. So for example, if an array had an integer, it would only have integer values. If it was a floating point, it would only have floating values. Lists are not like that. It can have integers, floats, complex numbers, strings, lists, tuples, dictionaries.
There can be so many other different data types that a list can hold. And lists are also mutable, meaning that you can change particular items in the list. Now, for any of you who do not know what arrays are basically used to construct data structures. Now, what are data structures? Data structures are basically the way in which you arrange your data. For example, at home, you have a bookshelf where you want to arrange the books in a certain way that is comfortable for you. That makes it much more easier for you to work with. Now, that's the same case with data. Data also has to be stored in a particular manner so that it is much more helpful for you to work with. That's the reason arrays are used to make up stacks and queues and so many other data structures that you have. This is where arrays are used. Let us go ahead and understand lists much more clearer with the operations that I already have prepared for you guys. Let me go back to the presentation mode. So, how do you initialize empty lists? It is using square braces. Square braces are used to denote a list, or you can do that using the list function. So let me run the program and you can see the code over here. So as you can see, I have empty lists over here. So that is really simple for you guys to understand. How do you initialize a list? You just add data in that particular way. Using the square braces, you just have element, comma, accordingly. But if you are using the list function, you have to make sure that you pass it as a single parameter. Because if you don't, this will throw an error to you. So let me go ahead and run this program. So as you can see, this is the data that I have in my lists. Let me go ahead and comment all of this. And we have accessing the elements of the list. So how do you access the elements in your list? That is basically done using indexes. Now, it is really important for you to understand what index is. Index is basically the address in which the data is stored. This may be true for lists, tuples, and even for strings. So let me show you how the address is stored in Python. So if I have the element 1, it is stored at the index 0. If I have the element 2, it is stored at the index 1. So the address always starts with 0 up till how many ever numbers you have. So this will be 2. This will be 3. And this will be 4. So the address of element 1 is 0. Address of element 2 is 1 and so on. There is also something which is called as the negative indexing in Python, which can help you to access data from the last or the bottom part of the list. So how is that? It starts from -1. So this will be -2, sorry. This will be -3. This will be -4. And this will be -5. So I hope you've understood what index is. Let me go ahead and just take out all of this. Yes. So now, how do you access the elements of the list? It is done using splicing. So basically what this means is that you want to particularly print certain parts of the list or string or tuple. There is something called as the starting index, stopping index, and the skip index. Here I have not given anything. So Python assumes that I want to print everything. So let me just print out the program for you. Yes. So as you can see over here, I am just saying that print of my list. So these are the different methods of how you can access the elements of your string. It's done using splicing. So splicing always has a starting index, it has an ending index, and it also has a skip index. So over here, I have not given the starting and the ending index. What this means is that Python will automatically think that I want to print all of the data. That is the reason I have all the data that is being printed over here. If I do not pass this, it will still give me the whole list that I have. So let me just run this again. As you can see, it is printing the whole list. So if I want to access a particular element, I have to pass the index value of it. So if this was 0, this was 1, this was 2, and this was 3, right? I am basically going to print Edureka, and that is what is being printed over here. Now it is with the starting index and the ending index, meaning that you have to start from the index 0 and go up to index 3, and you have to exclude index 4.
So that is what happens over here. So it is 1, 2, 3 and Edureka. That means that I start from index 0, go up till 3 and I skip 4. If I want to reverse it, I do not give any starting or ending index. I just do it from -1. So the list is being reversed over here. So that's what happens over here, as you can see. Next is something called as the skip index, right? Now I start from 0, go up till 5 and skip 2 elements, meaning that I print 1, I skip 1 and I skip 2 and I print 3. I skip 3, I skip Edureka and I print Python. So that is what happens over here. As you can see, that is how you have obtained the output. Next is the third element and the second next. The next is I can also access particular elements within the elements. So basically what I am saying over here is that I want to print U. How do I do that? I know that Edureka is at index 3 and I also know that U is at the index 2. So I just add that over here. So I have 3 and 2. And that's the reason I have U that is being printed over here. So I hope you have understood what is indexing and how you can access the elements using splicing and indexing. Let us move ahead and add data into the list. How do you do that? You do that using the append function, the extend function, and the insert function. So let me just go ahead and show this to you, how it is being done. Now, so the append function adds the element at the end of the list. The extend function also adds the element at the end of the list. So what is the difference between them? Well, the difference between them is that the append function adds it as a particular element. It adds it as a single element. The extend function does not work like that. It adds all the elements one by one, whereas the append function just adds it as a single element. That's the reason if you go over here, you can see that 555 and 12, which is being passed actually as a list, is added as a list itself. So I have 1, 2, 3, Edureka, Python, and I have 555 and 12. But whereas in the extend function, I have 555 and 12 independently, and that's the reason I have 7 as the length of the list. The length of the list is basically to show how many elements are there in the list. And then I have the insert function, which takes the index at which I want to insert the particular data. That's the reason over here, if you can see, I have one insert example, and accordingly, the data is not deleted when you use the insert function. The next ways are to use the concatenation and multiplication, but they do not affect the actual data of the list. As you can see over here, I just have printing of my list. But if I was not printing it, it would actually change the data of it. But since I am using it in the print function, the data will not be changed. So as you can see over here, I have one accordingly, and just for example, and then multiplication is multiplying the list accordingly to the number you have told it to be multiplied with. So the whole list will be multiplied 2 times. And then just to show you that if I am printing all of this, it does not change the actual data. I have printed my list and you can see that my list is unaffected. So that is basically how you can add elements. Now let's move ahead and see how we can delete elements from the lists. Let me go ahead and run the program. As you can see, I have 2 lists and I have extended my list using 555, 12 and example. One way of deleting is by deleting it using the del keyword. I just say delete and pass the element that I want to delete and it will be deleted. The next one is using the remove function. So I just pass the element that has to be removed from the list and accordingly that will be removed. So that's the reason here, as you can see, 555 was deleted using the del keyword and example was removed using the dot remove function. The next is the pop function. The pop function and the delete function are basically doing the same thing with one exception. The delete keyword does not return anything, whereas the pop function returns the value back to you. So you can use it accordingly to how you want. So I'm just saying that pop the element which is at index 5. That's the reason the popped element over here is 12 and the remaining list is 45, 3.142, fun and cool. And then the last function is the clear function, which returns an empty list.
So I hope you've understood what are the different ways that you can delete the data from your lists. Let's move ahead to just see the different other functions that are there in Python. If you remember, the length function is used to return the length of the function, and that is the reason we have obtained 5 over here. The next is the index function, which is used to return the index where this particular element exists. And this element exists at 3. That's the reason we have 3 at the output over here. Then we have the count, which basically tells that I want the count of Edureka, which is being repeated in this particular list. So in our example, it is repeated just once. So that's the reason we will only get it as 1 over here. So now we have the sorted and the sort function. The sorted has a return type, whereas the sort function does not have a return type. So if you want to use either the sort or the sorted function, you need to make sure that the data that you have is of the same data type. If I try to use the sort and sorted function on these, it would not work. That's the reason I have a new list over here. So I'm just printing the sorted value over here. So that is 3, 4, 5, 12, and 45. And then I am going to sort 45. And then you can see that it has not affected the actual list. That's the reason I have it over here. So sorted does not change the actual value of the list. It just prints it accordingly. But if I use the sort function, it would actually change the value of the list. So if I have a sort and it uses a keyword which is reverse is equal to true. If the reverse is equal to true, it will sort it in the descending order. If the reverse is equal to false, it will sort it in the ascending order. So that is what is happening here. So this is in the descending order right now. And then I just reverse it using the dot reverse function. So the data will now be reversed, which is basically now in the ascending order. And then I have the dot copy function, which is used to copy a list into another list. So it is mylist.copy into the new list. So if I have printed the new list, you can see I have the data of my list. So that basically wraps up list operations. I hope all of you are clear with it. So let's move ahead with the next data type. Let me just close this up. So the next data type that we have are tuples. What are tuples? Tuples are basically the same as lists with one exception, that they are not mutable, meaning that you cannot change the data in tuples. This makes tuples much more faster than lists. So how are tuples written? They are written using the parentheses. So let's move ahead directly to our tutorial. Let me run this. So as you can see, I have either the parenthesis or the tuple function, and it is the same over here also. If you want to initialize the data, you will have to send it as a single variable in the tuple function, whereas you can use commas in the parentheses. You can see here we have empty lists. Let me go ahead, comment this out. And let me uncomment all of this. Where would you use empty tuples? It would be cases where you do not know what exactly data has to be sent into the tuple. So what do you do over here? You can just concatenate data into it. So for example, my tuple equal to my tuple plus 1, 2, 3. Let me print my tuple over here. Let me go ahead and run this. So as you can see, I have 1, 2, 3 in the tuple. This was because I did not know what do I need to add in my tuple in the previous example. But as soon as I kept doing some sort of operations, I was able to understand what data I need to add. And that's the reason I concatenated it using the tuple. But now if I try to change my tuple's data, as you can see, that statement seems to have no effect, meaning that the tuple will not have any sort of changement, or it cannot be mutated. So that's the reason you may want to have some sort of, empty tuple, which you may later be populating. So that may be one reason where you want to use empty tuples, where you do not know what data you need to have,
but slowly you can populate it accordingly. This is basically how you initialize your elements in the tuple. Let me go ahead and run this. So as you can see, I have 1, 2, 3 and tuple, and all of this is sent to it as a single element. So that is what is happening over here. Now, there is one thing that you always need to remember. When you want to have a tuple with a single element, make sure that it is always with a comma at the end. Why is this important? Is because if I remove the comma and I show you the type that is my tuple 3, it is now a string data. So that is the reason a comma is needed, so that you can have a tuple with a single element. So I hope you have understood how do you initialize the data. The accessing of elements is the same way as you do it with the lists. So let me go ahead and run this. As you can see, 1, 2, 3 Python and accordingly. So the 0th element of my tuple is 1 over here. And I want to print everything. So Python for Eureka is printed. And then I have the third element, which is a list over here. And I want to print the element which is at index number 1. That is Python. This is how I access the elements. You can actually change the data in a tuple if the data you are trying to change is mutable. So here I have 1, 2, 3, Hindi and Python. Now you know that this is a list and a list is basically mutable, right? So I can change the data in this particular list, but I cannot change the whole list. Why? It's because it is a part of the tuple. So I'm just saying go to the list index and then change the 0th element, that is Hindi, change it to English. So if I print this, I have 1, 2, 3 English and Python over here. So that is one way you can actually change the data of a tuple. And we have just a few more methods, which are the count method and the index method, which is the same as how it works in lists. So the count of 2 is actually just 1, and the index of Hindi and Python is 3. So I have 1 and 3 as the output. So that basically wraps up tuples. Let's move ahead to the next data type, which are dictionaries. So dictionaries are used to hold key value pairs and they are mutable. Now you may be confused what are key value pairs. So let me help you understand all of this with a real world example. Okay. Think of your contacts application on the cell phone. If you see it and go ahead to add a contact, you will always see a few fields that are common all the time. You have name, you have phone number, and all the other data that you want to add accordingly. Let us just understand how this works. The data we have is name, which is the key. It is always common for everybody. And we have phone number, which is again the key, which is common for everybody. But the value that you enter in those particular fields will be different accordingly. Because you have a name and the value you enter for that name, you have a phone number, you have a different phone number for that particular name. So that's how it works, right? So it is basically key and value. So you have the name, which is the key, and the value that you enter is the name of the person. So that is basically what is a key value pair. So for example, over here, I have a name, that is my name, that's Akash, and I have the horoscope sign of mine, that is the Libra. This is one way how you can have a dictionary. It is to store the horoscope sign of all the people. You have name as Akash and sign as Libra, where name is the key and Akash is the value. Sign is the key and Libra is the value. So let's move ahead and go to the tutorial that I have ready for you. How do you initialize an empty dictionary? It is done using the flower braces, or it is done using the dict method, D-I-C-T. So let me run this and you will be able to see that there are empty dictionaries over here. Let me go ahead and add back and remove braces to where we need it. So how do you initialize the elements in the dictionary? It is the key and the value. So that is how you actually do it in dictionaries. So always a key value pair is taken, because dictionaries are basically key value pairs. So let me go ahead and run this. One is the key followed by a colon and then the value
that that particular key has. So I have 1 Python, 2 Java, 1 C++, and 2 Ruby. So that is how you initialize your dictionary. Let me go ahead and uncomment the next session. So the next is to access the elements. So to access the elements of the dictionary, you do it using the keys. So I have the first as the key and Python as the value, second as the key and Java as the value. So I have my dict and then the key name, which is first. Give me the value from this dictionary where the key value is first. And I can do that even using the .get method where I just pass the key value of that particular element. So let me go ahead and run this. So as you can see, I have obtained the value Python because I said that I want the value in my dictionary and it has the key first. Same thing is done using the get method where I get the value for whichever I have the key as second. So I hope that makes sense to you guys. Let me show you how you can change and add elements into your dictionary. So this is the dictionary that we have over here. And then I want to change the data that is in a second, saying that I do not want Java. I want this to be C++.